right, let's look at okay. So let's do this. Audio should be okay here. Audio, 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 audio. Audio, 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 mic, okay. Okay. All right, Zoom is on. Instagram is good. TikTok is good. Facebook is good. RTMP is good. LinkedIn is good. Twitter is good. So we are live. Let's update the areas. Night session. Good morning, G. So let's look at Nasdaq 21715 high. 21715 high. And we have low 21575. And 578, that's good enough. All right. This is meeting.
All right, areas are updated. So everywhere, if you want to refresh it, we're good to go. And so today, what is it? Base is up. नहीं उसको थोड़ा रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश राइट क्लिक करके अभी अपडेट हुए हैं, अभी 30 सेकंड में हो जाएंगे, वो सिंक हो रहा है across the cloud servers AWS. हो गया अपडेट? ठीक है, yeah, it takes microseconds to go globally across all. हाँ, लेकिन अभी आपने अगर पहली दफा लॉगिन कर रहे हैं तो लेटेस्ट डेटा लेता है, लेकिन अगर आपने पहले ऑन किया हुआ था अब फिर रिफ्रेश कर लें, रीलोड निंजा स्क्रिप्ट, तो वो फिर डाउन. Trading view is still not yet up, so that'll take some time. But Ninja is working. Base is up, pressure is down. Let's see. So 21 again, 280. That's our thing. Where's the price right now? 21,623. Okay. $30-20 divergence. Let me refresh. Reload. Reload. It's heading towards S1 almost, so reload. So S1 got touched. So Nasdaq और वो S1 तो very close है ना, नाइट सेशन के करीब करीब है, और R1 नाइट सेशन हाई के करीब है. GDP is less, right? So more things could go down. Negative. Unemployment claims are less. That's good. But advanced GDP is better than previous, but quarter over quarter, but worse than expected. So we still go with the previous. So previous is 1.9, now is 2.2. Only bad news is the first one, because previous 3.1, forecast was 2.7. It's much lower than forecast, much lower than previous. So that's a bad news. Unemployment claims are good, so that's neutral. And the last is advanced GDP is good, even though numbers are red, but it's better than previous, better than expected, right? So we just kind of go in with the flow. All right, let me test my cams. So cam 1 is good. Cam 1 is good. Cam 2 is good. The board cam, screen cam, and the audience cam, classroom cam. All right, good. Everything is good. Okay. Interest rate was yesterday. Thank you. आते हैं मैं अभी सेट करवा देता हूँ. 30 minutes के बाद आता है.
क्या नाम है मेरा एमडी मल्टी लाइन 250 टिक है आगे अलावा ना हमारा भी वनडे है कल के पास आगे कैसे जाते हैं दूसरे ग्राफ्स को देखो देखा मैं आपके ग्राफ की वो टाइप देख रहा हूँ इसमें मेरे पास एक ही है इस टाइप क्या बोला था फिर आपका हमने ट्रेड 30 minutes ड्रॉप सिर्फ 30 मिनट ग्राफ मेरे में नहीं है 30 मिनट ग्राफ मेरे में नहीं है मैं सेट कर आज थोड़ी सी ओरिएंटेशन के बाद आपका लॉगिन करके कर दे नो वो करना क्या है नहीं असल में बिगिनर्स को हम वो नहीं लेते बिगिनर्स हैं बिगिनर्स को हम एटलीस्ट 1 वीक फोकस रखते हैं मिड बैंड कि हम बाय करें सेल करें बाय तो वो अब आपका अगला टॉपिक मिक्स हो रहा है एरियाज वाला तो आपका फोकस हट जाएगा कि क्योंकि वो एरियाज जो है ना वो जनरली बाद में आते हैं अबाउट अ वीक के बाद कि आपको नजर आने लग जाए कि जिस तरह ये चार्ट खुला हो ये 30 मिनट का चार्ट है और ये एरियाज लगे हुए तो जो वेट कर रहा है सर्टेन नंबर का क्योंकि एरियाज में आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं तो वो फिर होता ही है कि आप मिड बैंड कर रहे होते हैं ग्रीन होता है तो वो आप कंफ्यूज होंगे कि हम सेल क्यों कर रहे हैं ग्रीन में या बाय क्यों कर रहे हैं रेड में तो वहां इसलिए फिर हम ना बिगिनर्स के लिए एरियाज नहीं सेट करते लो जी पहला मिड बैंड टेस्ट हो रहा है अभी और एक लिए नीचे आया था पॉइंट अच्छा होके वापस गया 2 पॉइंट दे गया था अच्छा ठीक है ये पहला मिड बैंड सर में जहाँ नैस्डैक जाती है वहां साथ साथ ईएस पे चली जाती है नहीं सिर्फ देखना होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है नीचे खुली हुई है आपका एक चार्ट खुला हुआ है एनक्यू लिखा हुआ है 30-20 पे एनक्यू देखें कि वो अगर 1 पॉइंट मूव होगी यस है ठीक है फिर आपको भी सेट नहीं करके दिया कि एक दफा हम नैस्डैक में ट्रेड बिगिनर चले गए ना फिर आप कहोगे यार ये बोरिंग है कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे क्योंकि नैस्डैक आपको करना होता है नंबर्स पे प्योर नंबर्स हाय यस अमेजिंग हाँ यही है ये सब पूरा एसेंशियल ये है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोग पता क्या करते हैं लोअर हाई हायर लो यहाँ से बाय करते हैं क्या होता है हाई के बाद हायर लो हाँ ब्यूटीफुल दिस इज अमेजिंग ये बेसिस है हर चीज का हाँ जी यहाँ पे सिर्फ एक चीज और लिखो एजेंडा मैंने तो कलर प्रिंट करना है मैंने कलर प्रिंटर में कोई बात नहीं मजेंटा ये जहाँ सेल लिखा है ना ये मजेंटा है हाँ जी इधर तक ना यहाँ से यहाँ हायर हाई हायर में जब तक आएगा ना ये ग्रीन हो जाएगा This is amazing. Majority put this as a background of the phone. Higher, high, pull back. Amazing. So
Oh, thank you, boss. Thank you. Thank you. Oh, thank you, यार. फोर्ट चाहिएगा मैं आपको नहीं, I'm good. I'm इसमें good. चीनी तो नहीं चाहिए चीनी का है. चीनी है ना ऑर्गेनिक शुगर डालो आपको ऐसे आप देखो तो मेरे को देखना पड़ता है। मैं भी देखता हूँ This is amazing. बढ़िया Simple सी चीज है, कोई चीज फोटो नहीं लगती। हाँ जी क्या कर रहे हो भाई You forgot it all. अंदर की तरफ। तो जगह बहुत कम है। मिड बैंड बिल्कुल फ्लैट जा रहा है 30-20 का. Consolidation price goes up 10 points, comes down 10 points. So all right, let me give my morning bit of a brief. All right, good morning, everybody. Thursday, January 30th, 2025, 8:58 a.m. Eastern. So good morning, good afternoon, and good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Whether in person or online globally. So we would like to welcome you to our institute. So let's look at what happened yesterday. Interest rate stayed the same, did not change. And today you have, and the statement came, so not too much volatility, nothing so crazy, unlike the last interest rate, but you also had Meta earnings and Microsoft earnings and one more company. Good morning, G. So yesterday we had Meta, Microsoft, and Tesla, and all of them. Tesla was so let's see the Tesla stock price. So pre-market, Tesla is up almost $17-18. Microsoft is down. Meta is up. So Microsoft and Meta could balance each other out. So three companies, two are down. One is down, two are up. Meta is up after market 9:30. तो अब 9:35, 9:40 तक ट्रेड FTMO में कर पाएंगे. Okay, जी done हो गया जी. Congratulations. Market very good, excellent. So if you're done, you're done. Today we have earnings. Apple, again a $1 trillion company, $3.6 trillion market cap. And then you have tomorrow Amazon. So today slightly movement after 4 p.m. You'll see Nasdaq move, which will move ES. So let's look at Nasdaq futures for today. First of all, let's look at the news.
So Thursday we had advanced GDP, unemployment claims, and advanced GDP quarter over quarter. So two news are good, one news is bad, maybe neutral. Let's see. But of course we work with daily areas. We don't care if the price goes up. We don't care if the price goes down. We're directional based day traders, and one student is already done and they left the office. So that's amazing. Discipline. You met your target, time to go home. So last night, the night session high for Nasdaq is 21,715. Night session low, 21,575. So difference between the whole thing is 140 points. So where is the price right now? 672. So very much close to your R1, because that is where the, and where is ES? Let's look at ES is again very in the middle. So ES night session high was your London session was 6101 to 6074. Again, green to go up. Wherever it goes, I think he will still say high to go low. So maybe expected high, we will short. The gap is very little between your areas today, especially R1 and R2. So personally, maybe R2, but let's see if R1 gets done and gives us a few points. So price is right now changing direction from, so base is up and pressure is down today. So high to go low would be the thing. It's not as crazy. You guys can still trade until 11, and then we'll go from there. So yesterday I did only one trade on Apex, didn't do in any other company, which is okay. So where is Nasdaq right now? 670. So this is coming your first pullback, 86. I'm sitting at 6086.50. 1 point. आप थोड़ा सा आपका फिर order pick हो गया होगा, नहीं हुआ? Okay. Because everything is green, I'm going in a buy. Good morning, Ji. So this is the first reversal. I got picked up right now. Yep. And I got my first point already from that mid-band. नहीं मैंने एक पॉइंट देख लिया है, मैंने ये कहा सॉरी एक पॉइंट तो नजर आ गया ना. तो अब ये चला जाएगा 100 पे तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा. सो फर्स्ट रिजर्व अब मेरा मैंने 87 पे है? नहीं अब लेट हो गया क्योंकि वो मिड बैंड को टच करके निकल गया. ये मेरा एपेक्स है तो मुझे पूरी लिमिट से निकलना. ये 30-20 का मिड बैंड भी उसी प्राइस पे है अप्रोक्सीमेटली जहां पर
So far, I saw $72. One point is still giving, almost $62 is. There you go. This mid-band passed. I'm considering it past 2 points you already got. Now trail, guys, trail. If my order got set to break even now, or you can use our ATM to auto trail. It's completely up to you. There you go, almost 3 points or more. Congratulations. Nasdaq is kind of heading down after this candle, so let's see. So I got my 2 points from this trade, from a mid-band. So your 2 points, $100 is done. 60-minute black candle is to the upside on Nasdaq. So वो क्लोज ही है, वहीं पर है तकरीबन, तो हो चुका है। यानी कि इस दफा वो जब आ रही थी प्राइस आई ना 6091 से, तो हम मिड बैंड पे बैठे हुए थे, वहां उसने हमें उठाया, 2 पॉइंट दिखाए, वापस उस कैंडल में नहीं अप लेना। तो ये वाली कैंडल टेक्निकली हो चुकी है। Because 3020 mid band is there, value area is 6082. Beautiful trade. So that candle is still, trying to decide. I took my 2 points in the first attempt. It's the first attempt that matters the most, because if this is a rejection week, second time, ठीक है। पहला जो देखिए वो text भी आपको कहता है buy on the first reversal, because that's the highest probability to go. अब आपका ये ऑर्डर आ रहा था, हायर हाई से आ रहा था, देखिए सिंपल मैथ है। अभी आपका पहला ट्रेड हो गया, दोनों ग्रीन है, प्राइस हायर हाई से आ रही है, ठीक है। हायर हाई से वो कह रही है आपने हायर लो से बाय करना, ठीक है, लेकिन हायर लो उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कैंडल पूरी फॉर्म नहीं होती। तो आपने बैठना है मिड बैंड पे। तो कंप्यूटर ने आपको एक प्राइस दी थी कि अगर आप बाय करना है तो 86 से बाय करें। नहीं ठीक है, लेकिन वो जो कैंडल हो चुकी है ना, वो उसके अंदर अब आपने वो, अगर आपने नहीं लिया तो मिस कर दिया, अगर आपने लिया तो 2 पॉइंट आए आपको।
अब 2 पॉइंट के लिए दोबारा ना एंटर हो जाएगा, क्योंकि अगली कैंडल बन लेने दें, ऊपर जाने दें, फिर एक और हायर हाई बनाए और फिर नीचे आए। तो आपका ये वाला ट्रेड 2 पॉइंट का डन हो गया। हाँ, यस, डन, ये वाला ट्रेड डन हो गया। आपने डिसाइड किया कि मैंने राइट, हाँ ये आपको अंदर देखना पड़ेगा 10-15 मिनट्स के बाद। तो ये वाला जो राइड थी आपने शॉर्ट ली, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर इस ट्रेड में बैठे हैं। वो क्या किया उन्होंने, 2 पॉइंट देखे ना, या एक 12 देखे, तो ब्लॉक कर दिया 0। इस ट्रेड में से नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब ये आप पे, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं, दोनों ग्रीन है कि यहां से शूट करे ऊपर, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, जिस तरह एटीएम की वीडियो बताई थी कि वो ट्रेल करते जाएंगे, $112 वो नीचे लगा के रखेंगे। वो कहेंगे ठीक है यार, लेकिन मैं बड़ा ट्रेड ना मिस कर दूं। जो बिगिनर ट्रेडर होता है ना, वो कहता है यार 112 तो आए ना, ये तो पकड़ूं, आगे देखूंगा बाद की बात, राइट। सो स्कैल्पिंग के लिए 1-2 पॉइंट ठीक है, और आपको दिन में 3 पॉइंट चाहिए। आपका पूरे दिन का टारगेट हर 3 पॉइंट्स होना चाहिए, और 2 हो चुके हैं, तो 1 रह गया है। तो अपने सितारे अलाइन करें अगली दफा और डन हो जाए। तो रेदर देन के आप रैंडमली एंटर हो जाए। अब मैं आपको सॉरी अपना दिखा देता हूँ। ये देखें, एपेक्स का अकाउंट है ना, $125 बन चुके हैं, ठीक है। मेरा यहाँ मेरा टारगेट 500 होता है, क्योंकि 3 लाख का अकाउंट है। 500 डिवाइडेड बाय 50, ये बनते हैं 10 पॉइंट डेली। और मैंने 500 डिवाइडेड बाय माइनस 125 ले लिया है डिवाइडेड। अब मैंने सिर्फ 7.5 पॉइंट लेने हैं पूरे दिन में। कुछ एरिया से ले लूंगा 2-3 मिड बैंड करके, अगर तो कई दफा मिड बैंड ले फॉरन ही प्राइस चढ़ जाती है। तो मेरा फोकस है 10 पॉइंट्स अ डे, क्योंकि मैंने 500 करना है 20 अकाउंट से, मेरा 10,000 का डे लगना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको 20 अकाउंट्स फॉलो किए हुए हैं। अभी मैंने बाकी किसी जगह नहीं लिया, ना टॉप स्टेप लिया, किसी भी और जगह नहीं लिया, लेकिन ये एक मिड बैंड की अपॉर्चुनिटी नजर आई। अब देखें वो बढ़ रही है प्राइस, ठीक है। अब जिन्होंने ट्रेल किया हुआ है ना, वो अब इसका फुल एडवांटेज वो लेंगे, क्योंकि अब यहां से ये चली जाती है R1 तक, फॉर एग्जांपल 6100 तक, तो उनको तो 15 पॉइंट एक ही ट्रेड में आ गए। लेकिन उन्होंने ऑलवेज वो रिस्क रखा हुआ है $112 का। मैं एपेक्स में ये नहीं कर सकता, पता क्यों? एपेक्स में मुझे अगर 112 का मेरा थ्रेशोल्ड खराब होता है, तो मैं एपेक्स में 2 पॉइंट 3 पॉइंट के बाद आ रहा हूँ, बुल लॉक्स में बाहर आ रहा हूँ, डे ट्रेडर्स में बाहर आ रहा हूँ। लेकिन जो आपके एंड ऑफ डे वाले हैं, पर्डिया हो गए, इसमें आप जितना खींच सकते हो। अब ये आपकी साइकोलॉजी पे है कि 12 पे फियर करना है ये, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आएगा। हम एफटीएम और ट्रेड खोलते हैं, वो पहले कल भी इन्होंने विक्रम जी ने लाइव देखा, वो -200 से फिर +600 पे जाती है। तो आपको होल्ड करने का जो आना चाहिए। अब उनका इस वक्त तकरीबन ट्रेड निकल गया होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द बार आ गया है। अब कुछ किसी ने लिए सिर्फ 100, किसी ने लिए 12, दोनों सक्सेसफुल ट्रेड गए, लेकिन अभी भी बॉटम ऑफ द बार आई नहीं है, क्योंकि 608 650 है इस कैंडल का बॉटम ऑफ द बार। So this is called, so your first trade is done. So 3 पॉइंट में से आपको मिल गए हैं 2 या 1, राइट। पूरे दिन में 3 पॉइंट चाहिए होते हैं टू बी सक्सेसफुल। अब ये नैस्डैक पर डिपेंड करता है, या तो इसको ले जाएगा R1 की तरफ, और ये सिर्फ टेस्ला को थोड़ा, ये सारा इलन का। I wish I did not have canceled all my options for NVIDIA. Oh man. फिर बॉटम ऑफ द बार लग रहा है, प्रेशर डाउन है, तो मैं लॉन्ग में वैसे घबराता हूँ।
कल 2:30 के बाद मैंने फिर मार्केट देखी, वो नीचे लेके जा रहा था, ऊपर वैसे ही लेके जा वो रहा था, स्टॉप नीचे लॉस लेके- हिट हो रहे थे हाँ, वो आपके, सारे सिर्फ टारगेट- स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे टारगेट क्योंकि उनको पता है कि स्टॉप देना ऑर्डर कहाँ होते हैं, है। अच्छा इधर लगे हुए हैं, हाँ, इनको उड़ा वो दो दोनों इधर। उड़ा रहे थे ऊपर से भी। Oh, yes. It was very right to say advice that Oh, not to yeah. trade this environment. सर कल आपने वन ऑफ द बेस्ट डेज देखे मार्केट मूवमेंट के, वो इंटरेस्ट रेट होता है, इससे बड़ी फिर आगे आ जाती है सीपीआई, इन्फ्लेशन डेटा, उसके नीचे फिर आ जाती है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये 2-3 हो गए, फिर आ गए कोई आपके कहीं एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिपोर्ट, उसके नीचे आ जाते जो बड़े लोग होंगे उनके पास तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही सारा होती सारा ही है, सारा देखें। अगर हमारा ग्रुप हो, हम सारे हेज फंड मैनेजर हो, आपको पता है कि लूटना है गरीबों को, तो वो तो ऑल इन direct मैनिपुलेटेड, वो या मैनिपुलेटेड, वो डिसाइड करते हैं कंपनी आर्ट है। गोल्ड का मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ अभी कि गोल्ड का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। सर क्रूड ऑयल मार्च पे चला, नहीं गोल्ड अप्रैल चला गया, लेकिन एरियाज के हिसाब से जाएं आप। अगर एरियाज की शीट पे जो लिखा है ना, हाँ फिर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल चला गया। यस यस यस। तो मैं अभी आपको 30 सेकंड में बताता हूँ कि गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त फ्यूचर्स जीसी अप्रैल का, विच इज गुड, आपको टाइम बहुत मिल जाता है। और दूसरा आपके क्रूड ऑयल मार्च में चला गया, हाँ, और नेचुरल गैस अगर कोई करता है तो ठीक है। आपको पता है मैं सेल वाला हूँ, नहीं है उसमें क्योंकि वहां से गई हुई है 2700 पे, राइट। गोल्ड एरिया यू कैन टेक 5 पॉइंट्स, $5 मिल जाते हैं यार, एटलीस्ट $3 तो देखा एक्सपेक्टेड हाई से मैंने। और हाँ, $3 इसको, इनको यार ये टिक्स डिफरेंट है। Daniel does more gold. I'm a Nasdaq guy, ES guy. So he's gonna start his brief soon. Hopefully no mic issues today. But yesterday voice was clear, just delayed. But here. अब 60 मिनट पे Nasdaq पे डाइवर्जेंस लगी हुई है, इतनी बुरी डबल डाइवर्जेंस है 60 मिनट के चार्ट पे, अगर कोई देख रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि उसने हायर हाई तो लगाया है, स्ट्रेंथ और बुलिंजर बैंड गए ही नहीं ऊपर, तो मोर चांसेस आज मार्केट को, ये सिर्फ ट्रू डिपेंड करता है कि एरिया कहां से आता है। तो अभी चल रहा है 60 मिनट पे डाइवर्जेंस है, लेट मी डबल चेक। 240 पे गिव मी अ सेकंड, बुलिंजर बैंड्स आए तो हायर हाई नहीं लगाया इसने 240 पे। 30 मिनट में लेट्स गो चेक 30 मिनट। No, so 60 minute is giving me a divergence to the downside on Nasdaq futures. Price made a higher high. Your Bollinger Bands did not make, and it's a double divergence. Sir, 30 minute रू 60 minute कर लो, थल्ले जिन्ने चार्ट चल रहे हैं ना उत्ते 60 minute वाला भी पिया हुआ है। क्योंकि ए उन्हें वास्ते हुंदा जिहड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ना, एटलीस्ट 4-4 दिन ट्रेड कर रहे हैं, वो क्योंकि 80 ते एंट्री लेवल सिर्फ 15, 10, 30, 20 तो लेनी है, लेकिन अगर किसी ने पोजीशन होल्ड की है 400-400 पॉइंट वास्ते, वो फिर एक ट्रेड पाते ने हफ्ते दा, अगर मार्केट 500 पॉइंट मूव हो गए तो अगर $20 है तो ऑलमोस्ट $10,000 वीक एक ट्रेड तो निकले आंदा है। तो देयर इज, हम तो स्कैल्पर्स है ना, डे ट्रेड इन एंड आउट, पर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए एफटीएम हो, डिफरेंट अकाउंट होता है, क्योंकि वो वीकेंड पे भी आप होल्ड कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लॉस में हो तो आपको कंडीशन नहीं है बंद करने की। सो सीएफडीज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, वो फिर पोजीशन ट्रेडर लोग कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं, वो लॉन्ग भी जा सकते हैं, शॉर्ट भी जा सकते हैं सेम टाइम। अब आपका एक लॉस है, लेट्स से $200 का लॉस चल रहा है, शाम के 5 बज गए, आप क्या करते हो, आप शॉर्ट में हो, ठीक है, आप क्या करते हो, उसी क्वांटिटी का एक लॉन्ग खोल लेते हो, वो जो 200 का लॉस है ना वो लॉक हो गया है,
क्योंकि आप जीरो सम की गेम है ना ये, तो आप -200 पे आओ तो आप लेस से शॉर्ट हो, आप उसी क्वांटिटी का एक लॉन्ग खोल लोगे। अब होगा ये, वो लॉस बढ़ेगा -100 200 -300, लेकिन इधर से आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इधर बढ़ रहा है ना प्रॉफिट। एक डायरेक्शन नीचे जा रही है, इसको हेजिंग कहते हैं। एक दूसरे के लोग स्टॉक्स के साथ ऑप्शन हेज कर देते हैं, बट दैट्स रियली बड़ा, उसको कैपिटल ज्यादा चाहिए। हमारी क्योंकि फोकस डे ट्रेडिंग में है, सुबह आते हैं शाम तक चले जाते हैं। हमारे देखें वो एक स्टूडेंट तो निकल भी गया, कह रहे हैं यार मेरा डेली टारगेट डन हो गया, मैं वेदर एपेक्स है, राइट। आप लोगों का 3 में से 2 पॉइंट हो चुके हैं, राइट। तो अब आप उतना ही स्लो हो जाएं जितना कि यार अब पैसे वो वापस थोड़ी देने हैं, राइट। सो कोई कंडीशन आई, अब देखें, लेट्स सी कि खुल जाएगी मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट इन अबाउट 7-8 मिनट्स 9 मिनट्स। तो वहाँ पे मतलब S1 की जो है वो बाय बनती है। S1 वैसे हो चुका है अर्ली, तो मैं इस, क्योंकि मुझे गैप लग रहा है कम, S2 एंड R2 आज मेरी, हाँ, मुझे जरा ज्यादा पसंद है। ज्यादा सेफ। सेफ कुछ भी नहीं है, अच्छा, safe नहीं कुछ भी मीनिंग के जो कंप्यूटर की प्रेडिक्शन है ना, उसके हिसाब से मैं पहले ब्रीफ उधर से कंफर्मेशन बिग बॉस से लेता हूँ हाँ, ठीक है। कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी क्या कहनी है। वो कहेंगे हाई टू गो लो, इसका है मिड बैंड टच हुआ, ये सर आपका था रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस, क्योंकि प्राइस ऊपर आई, रिट्रेस हुई, रेड में आपके एरिया पे आई, कोई भी डॉट नहीं आई, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आई, तो गैप ट्रेड भी बना, रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस भी बनी, और ये मिड बैंड भी ट्रेड हो गया। तो अगर आपने बैठे होते सेल में मिड बैंड पे ऑर्डर लगा के, तो ट्रेंड चेंज हो जाए ना दोनों का, तो सेल पे बैठ जाए जाके, आपने वेट नहीं करना कि मैं करीब आएगी तो एंटर करना है। लेकिन यहाँ पे इसका 30-20 का ट्रेंड नहीं अभी यहाँ 30-20 नहीं हुआ, एनी टाइम हो जाएगा, क्योंकि 85 से नीचे 81 पे आना है, ट्रेंड चेंज हो जाना है, क्योंकि ओनली नहीं अब ठीक है, मैं अंडरस्टैंड है, लेकिन उन्होंने ट्रेंड चेंज हुआ तो 15-10 का, और बस सेल में बैठ गए। 5 में से एक कंडीशन फॉलो की ना, अभी 30-20 नहीं ग्रीन हुआ, नहीं हुए थे ना, तो 5 कंडीशन टोटल होती है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए। कोई एक ले रहा है, कोई 2 पे कह रहा है कि अब देखिए उन्होंने कलर नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने कहा मैं सेल में जाऊंगा, मिड बैंड से जाऊंगा, उन्होंने इग्नोर बाकी चीजें कर दी कि नहीं सेल किया और फिर बाय कर लिया 2 पॉइंट के बाद। तो 5 में से आप 5 की 5 बेस्ट हो ना, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो फॉर मी इतना रियली। आप डेमो पे नैस्डैक पे नहीं है? अच्छा मैं अच्छा मैं कहूँ मेरे चार्ट अभी उधर पहुंचा, लेकिन वो 15-10 में भी मजे की बात है, रिट्रेसमेंट डाइवर्जन ही थी, वो ऊपर बार पे आया था। नहीं मुझे ये लगा कि इन्होंने टॉप ऑफ द बार लिया है, तो 15-10 के टॉप ऑफ द बार पे आई ना, आई और वहां से सेल किया, मैंने कहा पॉइंट ले लिए, तो ठीक है, इट्स ए वैलिड ट्रेड, कोई गलत नहीं था, इन्होंने कोई गलत, इसमें भी ये सही ट्रेड था, आपने टॉप ऑफ द बार से सेल कर दिया, टॉप ऑफ द बार से सेल किया, और अब ये लोअर लो से नहीं आ रही, ये हायर लो से आ रही है, तो ये एक कंडीशन मिसमैच हो रही है। अब दोनों चार्ट ठीक हैं, एरिया भी नहीं है, डाइवर्जेंस भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन मिसमैच हो रही है कि लोअर लो से पुल बैक नहीं आ रहा। ये नैस्डैक जो है ना, ये आपको आज शायद अपनी डाइवर्जेंस सीधी कर जाए। The number to watch for me for Nasdaq today is 21,367. That's what I'm. ये 60 मिनट के चार्ट का एक्सपेक्टेड लो के पास ये नंबर है, तो that's a number I would like to watch if it goes there. है नहीं एक्सपेक्टेड लो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो क्योंकि अगर 60 मिनट पे जो डबल डाइवर्जेंस आई हुई है ना, वो आपको बता रही है कि 21,367
गुड सपोर्ट बन सकती है। R1 पे गई नहीं अभी, देखें इस कैंडल को, अभी भी 34 मिनट हैं। He's gonna take over anytime, so I'll bridge the mic and go for सर 5 बजे 4 बजे 4 तो बाद वैसे हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਲਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਮੈਟਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਟੈਸਲਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟਲੀਸਟ R2 ਦਾ ਜੀ। आज है एप्पल की, बहुत बड़ा है, लाइक यू नो मेरे पर्सनल ओपिनियन में एप्पल की इनोवेशन खत्म हो गई है। पर्सनली मेरी जो है ना, ठीक है, बहुत स्टेल हो गई है। उन्होंने वो ट्राई किया था विजन वाला, वो ना विजन प्रो नहीं सही चला, तो मेरे हिसाब से एप्पल जो है ना, हाँ देखिए 16 प्रो है, राइट यार, एक ही डिजाइन हमें हर साल बाद 2000 का चिपका देते हैं, हम भी बेवकूफों की तरह ले लेते हैं। 16 आ रहा है, तो इनोवेशन जब खत्म हो जाए ना, तो कल मैंने एक मजे का स्टेटस पढ़ा लगाया कि एक बेवकूफ जो बंदा है ना, अगर वो डिसिप्लिन है ना, वो ज्यादा तरक्की करता है कंपेयर टू जो एक समझदार डिस्ट्रैक्टेड होता है। वो अपने आप को कहता है कि मुझे एक जरूरत नहीं है, तो वो स्लोली चलता रहता है और वो पहुंच जाता है। तो ठीक है, इस बिजनेस में एरोगेंसी नहीं चाहिए। ये तो हमें है कि भाई डजंट मैटर, आप 50 साल से ट्रेड कर रहे हो, एक दिन एरोगेंट हुए, या फॉलो रूल्स ब्रदर। अब ये टॉप ऑफ द बार आ रही है, ये वैल्यू एरिया को इसने टच किया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जैन जी, वालेकुम सलाम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग तैमूर भाई, चोई साहब गुड मॉर्निंग, शेकेश गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग, मनीष शिंदर जी गुड मॉर्निंग जी, अब्बास भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग निल्सन, रंजीत जी गुड मॉर्निंग, हरलीन, सौरभ, मनप्रीत जी गुड मॉर्निंग, अल्फा जी गुड मॉर्निंग, क्लिफर्ड, माजिद, जगदीप जी गुड मॉर्निंग, Sunil, to understand it. You may not get the full grasp of the concept, good especially morning, if you everybody, are good morning. very new to Joginder it, ji, meaning good that you're morning, into ji. trading, very new, Nina and ji, good morning, good morning. then Quick it may review take you for a the few disclaimer guide, tries all of material like going involved over the in one videos a or couple of both times, of but training if you not already intended know as how trading trading advice. works, It's just you meant can to skip enhance some concepts, your let's say trading value decision. Will area, not make it for resistance, you, and you support, take no things like that. responsibility for So any we have profit or put loss. together a You're solely comprehensive responsible for study all your guide on actions, and how don't think trading you hit works. money yesterday So or again, missed we're it not selling today. you a course, Always but be on we your are toes, always giving brace you your a piece stop of and all software that ready you to should accept watch those all these losses, and videos do what you to see. understand how Don't do what everything you think, works. and treat this market So the very first let's day go you back to the trade, and Excel. all the What are areas you we getting? have So on you're getting free superareas.com or videos on and our graphs are PDFs not buy and sell regarding offer or buy and sell areas. These are just for the software information that and we have education created. purposes only, Of course, and we take software no itself responsibility for is any action taken by any fully user or any complete, subscriber. is given to you Today, for free for S&P 14 500, days full Nasdaq, trial. How it Dow works, is I'll show down. you Dow in a is down. second how All three it markets are works. up above And above value so that area. is done. And What else? pressure is If you go down. back to Pressure is training down. videos, High to go, PDFs low and would be a videos are good there. strategy Of today. course, The you get S1 a today, live S1 stream. very strong So support. While we're you can sitting talk here, to actually us, done listen for to the us day from on day 2. 74, So we are 75, giving you 76. Beautiful push live up, stream, went free up to live stream. 90 That is area and once that 91 actually. once And we go then online after from our 91, it trading came down floor, S&P 500, and you are after able 9 to a.m. tune to us, listen to Nasdaq, us, same watch thing, and hit watch our the charts S1 and live and bounced back everything. up. So today, our So S&P live 500, stream our from expected high trading is floor. 61.30.
44 to Okay. 42. Our low If you for like S&P our 500 software, is see how 60, 14 days 35 to go, 25. you Nasdaq, can our then expected subscribe high is to our trading 21,910 to software for 950, and our $2.99 expected low per for month, Nasdaq is if you like. So that's how it works. We 300. have an optional mentorship Gold, program. Of guys, course, you please can make sure you talk change to, your gold if you contract, click and on I fixed mentoring, the we have gold few mentors prices that for you April can 25. basically April 25. get So one-on-one gold already coaching hit our in terms expected of high for the day. 33 is our gold high today, 28 to 33. if you like. So if you we have an remember, I option. was telling you guys I'm expecting 3,000 very soon, and that's what the gold is heading towards 3,000. It will take time. Not maybe we'll see before April contract or close April contract closing. We'll see 3,000. But overall, gold is up, a very strong push to the upside. News today, we have advanced GDP, unemployment claims, not much impact, but red to go up, green to go down. GDP, red to go up, green to go down. Pending home sales, green to go down, and red to go up. Same thing. Today, overall, yesterday we didn't get much impact from the market, and it just, if you look at the market, it came down, went very close to shy 2 points from our expected low, and from expected low bounce back up. And 2 o'clock, we got our diamond pattern. It starts from 2 o'clock, wherever it goes, it came back to the same place. It went down and came back to the same place yesterday. They are not deciding how long they will hold the interest rate. I mean, they're not going to cut, and they are expecting all this year. They don't want to cut the interest rate. We'll see what they might change their plan according to the pressure from Trump management. Overall, guys, again, gold, a very strong push to the upside, and gold is still pushing up. British pound is up. British pound starts from, if you see above PP, it stay above PP whole night, and then after 7, 8 o'clock, start coming down and came down to test the PP. Actually trying to fill up the value area very close, almost 80% had fill up the value area, and from value area bounce back up. Canadian dollar is dead. Whole night, Canadian dollar didn't do anything. It just paused at magenta midband and the PP area. Euro already hit our expected high just right now. While we're sitting here, it just went up and shoot to the upside and hit our expected high for the day, euro. And then our crude oil is up, bouncing back up. It was below PP, base is down, but pressure is building to the upside. Very strong push to the upside from 5 a.m. If you see after 5 o'clock, start bouncing back up. 97 cents, $970 push to the upside. And crude oil is sitting at PP area right now. And then we have FDAX. FDAX stay above value area. Whole night it stay above value area. It just slow, but it's still very strong push to the upside and at R1 area. Gold already very nicely hit twice our expected high for the day. And right now, 33.30 cents is our high. And the gold is supposed to come down, but remember, gold, only one strategy on gold. I don't understand why people, it's up to you. If you want to do, go short. Best is anytime gold drop and gold has only one way, and that one way push to the upside. And if you see Monday, from Monday, it was 27.59 and 27.59 and went up. Imagine in just 1 week how much money you are making. It's like a brutal money. If you understand gold, only one type of trade is to the upside. And our copper, if you see copper break yesterday high, very strong push to the upside. And right now sitting at R1 area. So 58 cents push. So 58, no, not 58, actually 0.058 push to the upside. And yesterday it went up 10 cents, came down, same thing, 0.5050. And right now it gives back just slightly above, creates a diversion,
Silver is banana today. Silver at our expected high for the day. You see, exactly at our expected high. And silver is very nice market if you have $14,000-15,000 in your account. So one lot is 12,800. So you need 15,000 in your account. Silver $1 push to the upside is 5,000 for you. So right now, if you see from a low, swing low, yesterday low, it went up $1.79. Imagine how much money you are making in just one day, 24 hours push to the upside, and it's very nice. It's very beautiful push to the upside. And then we have Bitcoin. Yesterday went up 4380, mean 4,380 from a low 10 o'clock. So after 10 o'clock we had low around 3 o'clock when Fed news came, and it bounced back up from 2120. And overall we have a retracement right now 1,095, just 25% came down. And right now pushing up, so Bitcoin base is up and pressure is up right now. And same thing with the Ethereum. So Ethereum right now went up R1 area. Right now retracing back to Ethereum today high is 3380, somewhere 3390 would be a very nice area. And $217 push to the upside from yesterday low. Remember, it didn't give us a low at 3 o'clock. It gave us low at 10 a.m. The sharp low system is not taking that low because no lower high. So there is a spike. So don't consider that spike. So 3,100 is our low for Ethereum. S&P 500, same thing. It's not doing much. Waiting for 10 o'clock news. Pressure is down. Pressure is down. We just need anything close below our S1 area. So anything close below S1 area, we'll see a very nice crisp push to the downside. The best is from high to go low, mean expected high to go low. Russell 2000, break our night session high, break our yesterday high. So right now, break even R1 and very close to our R2 area. And other thing I want to mention, guys, why you guys wait for till the end for your super areas, guys? You are getting message 5 days ahead. So if you are start getting messages, you can pay or you can just send me message earlier. And please make sure it's a pay service, guys. If your 3 months are finished, so try to pay, guys, please. And have a nice day, guys. Please take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. Waiting for name. Good morning. All right. So that was the brief. So high to go low is the strategy. So let's see which way does it go. Sir, R1, which is opposed to R1. हाँ that was R1 पे सेल बनता है लेकिन R1 और उसका गैप बहुत कम है. R1 और उसका R2. R2 में तो R1 strong may be may not be लेकिन
नहीं R1 से भी कंप्यूटर ने प्रोडिक्ट किया है ना, लेकिन आज जो गैप है ना सिर्फ 10 पॉइंट का है R1 R2 के अंदर। इस मिडबैंड ने 1 पॉइंट दिखाया था, ये जो ऊपर से हायर हाई से आ रहा था ना 3 डाइवर्जेंस के बाद। टारगेट ऊपर लगाया हुआ था तो हाँ, जल्दी थोड़ा मिडबैंड पे लगाया था। मिडल पे गया, हाँ टारगेट काफी ऊपर था। अच्छा, टारगेट ज्यादा ऊपर था, ठीक है। ठीक, sorry। 2 पॉइंट का मीनिंग। मैं वैसे स्ट्रेट से बाहर नहीं आया था, मैं 30-20 का ब्लैक कैंडल के बाद फिर ब्रेक इवन पे निकला। ट्रेल कर रहे हैं आप, वेरी गुड। हाँ वो नहीं वरी करना, आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाएं। नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे। हाँ, वो स्टॉप लॉस को सिर्फ मूव करना है, उठाना है। हाँ हाँ नहीं, मैं फिर देखता हूँ कि आप ट्रेल कैसे कर रहे हैं। दैट्स मैं आपकी देखता हूँ अभी 11 o'clock के बाद ना। इधर R1 बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है नैस्डैक पे, क्योंकि नैस्डैक का R1 जो 715 है ना, सो send me a message on WhatsApp. I will put you in happy Zoom, so you only take trades when he takes trades. Don't trade for yourself. This midband, anybody took? There you go. ठीक है, no problem. 2 पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, 2 पॉइंट आगे मिडबैंड पे। बड़ी प्यारी रिट्रेसमेंट दी, वापस चला गया 2 पॉइंट के बाद। नैस्डैक की स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही, तो नैस्डैक पुश कर रही है ये इसको बार बार नीचे। $84 मेटा। ओके, वेरी गुड। मेटा में आप कर रहे हैं। FTMO does let you trade stocks, yes. Still, this midband is valid because it's is 7.75. 30-20 midband gave you guys 3 points. I am trailing now. I am trailing right now 100%. Very close. Done. 4 points done. Large triggers both were okay, did not hit a stop loss, and gave us at least 2 points minimum. $15 minutes to the new candle. Very close to R1, guys. Anytime. Less than, what, 5 points? Yep.
You guys is closer to 97. So why do I say R1? Because look at 30-20, strength has lots of room to go up, right? So it's only at like 77% and 66%, right? So if it didn't stop, you could run into a bit of a trouble on stop loss. So, right. And over there, Nasdaq doesn't want to go up anymore. It's constantly dropping. So morning high क्या लग गया जी अभी तक? Morning high लग गया. Morning high लग गया 668. $21,668 became the morning high for Nasdaq, and morning low became 21,596. Only 72 points, so very close to S1. Sorry for Nasdaq 591. So I kind of call it done. That's so trail. These are the trailers who are taking the full. So out of 8 points, they have gotten 5 points done. Large triggers on 30-20 are kind of messed up. They're open, but they're not wide open, right? The way we want. Now they're starting to be wide open. There you go. Remember, Nasdaq is not in a R1, and we are very close to R1. So let's look at the price difference. So 710 minus 672, 38 divided by 7. Still have 6 points gap. Maybe upper range of, लेकिन Nasdaq नहीं पहुंची अभी. Maybe the upper range. That's why I'm not taking R1 at a bottom range. Not yet. Because Nasdaq still has quite a bit of room too. So I have my order sitting at quite high up there. हाँ 3 पे 3 पे बैठा हूँ मैं. 103. हाँ जी क्योंकि अभी Nasdaq को थोड़ा रूम चाहिए, एटलीस्ट 15 पॉइंट चाहिए जाने के लिए, जो इसको पुश कर देंगे अंदर की तरफ. अब जहां रिस्क तो स्टार्ट हो गया है, 61 से रिस्क हो गया है. अब यहाँ हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं. यहाँ की ये वो सेलिंग है. देखें जी Nasdaq R1 में अब आई है. So be ready guys for Nasdaq अब एंटर हो के थोड़ा थोड़ा शायद नीचे आए. हाँ जी हाँ नहीं लेकिन अगर कलर चेंज हो गया वो हो गया फिर हाँ वो नीचे गई ना, इट्स ओके. लेकिन 9 तक 8.5 तक आप रख सकते हैं उसको, क्योंकि आपको उस वक्त तक स्टॉप लॉस नहीं होता था. देयर यू गो. वी आर इन प्योर R1 in both sides. Nasdaq is another somewhat of a divergence. 716 became high. So now we are in both R1. My order got picked up on here. Let's see if it does a reversal from R1, because still doesn't want to. So R1 was yeah. So if you entered at anywhere, it's R1 sir इतना strong नहीं है. So yeah. Nasdaq निकल गई जी 700. हाँ 700 ऊपर वाली रेंज ले गई है R1 की. आप अपना स्टॉप लॉस कितना है? 5 पॉइंट तो रखे ना. 5 पॉइंट R1 बहुत क्लोज है जी R2. अब यहाँ से अगर Nasdaq रिट्रेस ले लेगी तो आप लोग वापस अंदर आ जाओगे 61 और 3 पे.
अब सिर्फ Nasdaq के रेमो करम पे है 738, तो Nasdaq is done SR1 and ES is done R1. हाँ जी, ले गए जी, ले गए बिल्कुल। Nasdaq को वो चीर फाड़ गए R1 में से। So, अब आप एंटर कहाँ हुए थे? 61 पे या 6103 पे? 4 पे, ठीक है। अभी तक 4 का मतलब है 5 पॉइंट के लॉस। नहीं 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 113 क्या 6101 बनता है। R2 पे तो लगा सकते हैं। अब आप वहां से Nasdaq तो रिट्रेस लेना शुरू कर रही है, 744 तक गई है। कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था 710 से 730 को। अब R2 क्लोज बहुत है। Let's see. Just what calculation? I'm just checking the difference between ES and Nasdaq price. It's 7 points difference approximately. Nasdaq moves 7 points, ES is approximately 1 point. So now it's severely starting to be overbought in 3020, क्योंकि वो जो गैप था वो सारा स्ट्रेंथ ने फिल किया। अभी भी R2 की तरफ जा रही है। तो 8 मिनट्स हैं कैंडल चेंज होने में। 10 o'clock न्यूज है आपकी। So pending home sales will come at 10 o'clock. Let's see which way it goes. अभी उधर R2 में थोड़ा सा गैप है, but let's see. It did not stop whatsoever. बड़ी लंबी कैंडल लेके गए हैं, so that's why it picked up all of it. Now it depends on Nasdaq if it wants to do a bit of a retrace and makes S1 R1 your support now. Nasdaq areas is done. Beautiful swing from exactly what we had expected. So it touched our area, touched our mid-band, gave you a couple of points. So if anybody waited for upper range of R1, beautiful Nasdaq trade, beautiful. And ES kind of, because yeah, but that's why I was worried about ES for that. It kind of tells you an experience with the ways that, hey, the distance is so close, the strength is not overbought. So you will learn to know when to skip an area, right? So, but here's the deal. Look, if you entered at 6103,
right? And you kind of held on to it. You kind of came out break even, right? So, but this mid-band worked, by the way. If you took this mid-band on 30-20, it worked. Now it's breaking. Now R2, guys. Now next is R2. It will try to make a divergence. So R2 for me in this case was a bit risky. R1, but Nasdaq did respect R1 100%. So nothing much. Take profit. I only got a point out of it. They're good enough. Bull knocks, couple of points. So let's wait for R2 now. Or buy from green mid-band. There you go. Congratulations. NQ, beautiful. Worth, as our computer said, anywhere from 710 to 730. And if you held on to it, beautiful trade. And Nasdaq, ES is now making a divergence. Look, strength is second time around is not going up. And if it touches R2, chances are it will come down because it will make a divergence. There you go. So perfect. Hopefully everybody's catching on to our language. डाइवर्जेंस तो बन रही है आपको देखें 30-20 का मिड बैंड से टच हुआ ऊपर आई ठीक है नीचे स्ट्रेंथ देखें स्ट्रेंथ कहीं पर भी ऊपर नहीं आई R1 जो है ना स्पेशली ये मेटा मोटा जितने सारे हैं ना थोड़ा आज मार्केट में वॉलेटिलिटी और कल भी इसका आफ्टर इफेक्ट रहना है क्योंकि कल है जी एप्पल अब देखें इतनी प्यारी डाइवर्जेंस बन रही है 30-20 में स्ट्रेंथ ऊपर नहीं आ रही और उसने 6109 तोड़ना है अभी और इधर भी डाइवर्जेंस बनी हुई है आपकी हो न्यूज़ व्हाटएवर हैपेंड वाज न्यूज़ गाइस if you were in short you probably got lucky Very lucky. there you go so this is news can happen so look at the spike down पूरे पेंडिंग होम सेल्स की न्यूज़ 10 बजे आई और शार्प उसने उठा ली आई वाजंट इन एनी ट्रेड बाय द वे अभी तो आ रही है सर व्हाट वाज द न्यूज़ नहीं फिर मोस्ट लाइकली न्यूज़ गॉट लीक्ड लेट्स सी पेंडिंग होम सेल्स की न्यूज़ की स्पाइक है 2 मिनट है तो बिकॉज़ दिस वाज अ बिग शार्प ड्रॉप कितने पॉइंट ड्रॉप हुई है 8 पॉइंट ड्रॉप हुई है 8.5 पॉइंट ड्रॉप हुई है ब्लिंक ऑफ एन आई Did somebody just massively sell? Who sold? Any? Okay, no. Stop loss, always. हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जाना है नहीं आपने बाय किस पॉइंट से किया था नहीं आई नो लेकिन पॉइंट नहीं था बाय मीनिंग वो मिड बैंड था पिछला आप थोड़ा अर्ली एंटर बाद में एंटर हुई हैं मिड बैंड पे वेट करें कि what type of chart is this these are called Renko bar charts price action they're not candle charts they move with price not time superareas.com gives you an algo these are called price action charts not time charts all right so stay in short and pending home somebody must have leaked this news this is too fast of a drop before the news 52 seconds to news let's see are they creating liquidity in Nasdaq what is that Tesla lost all the money Tesla 389 all right we are in sell but remember 30 seconds to news guys 24 seconds to news 21 20 pending home sales and it is medium impact so didn't touch the mid-band so much so with a stop loss never need to panic
So Microsoft is down 4% today. Tesla is dropping. And Meta is only up. Meta went to $30. My God, like four. Okay. News is very bad, pending home sale. So not too many homes got sold. So whoever probably got the wind of it, the news, they probably shorted. And Meta, a few months ago, 3 months ago, Meta was trading at 560. Now it's 706. Crazy. They're heading almost 2 trillion, 1.78. The 60-minute divergence is on Nasdaq. Divergence. All right. Oh, beautiful drop. Beautiful. Nasdaq. हैं? कोई फर्क आ रहा है? ये देखें ना, इनसाइड न्यूज किस तेजी से गिरी है जी. ले गए हैं, S1 की तरफ ले गए. प्रेशर इज डाउन. सर S1 को भी ये पेनिट्रेट कर देगी जिस स्पीड से जा रही है. और देखें फ्री फॉल हो गया Nasdaq पे शुरू. कैंडल का साइज था. But S1 is done on Nasdaq one more time. It was already done earlier, but let's see if it penetrates through this. And it filled up the value area trying to. What a beautiful drop. Exactly area से bounce हुई है जी हमारे predicted से. अभी हो रही है. Let's see. क्योंकि 60 मिनट का मिड बैंड भी वहीं खड़ा है S1 के अंदर. So let's see if it's a strong support or not. मिड बैंड पे आई नहीं. Nasdaq is penetrated through S1. And now wants to go down. Speed देखिए. Nasdaq. Eh? I did short from mid-band. Right now I'm doing with an ATM. This is how fast it's moving.
Okay. There you go. 30-20 mid band. It worked and it's giving me still some points. So our S1 is done as well. It's a strong support, 60-minute mid band. Let's see. All right, your mid band on 1510 worked as well, guys. Beautiful. Start trailing if you can. Perfect. है? नहीं देखें, आपको अपने लॉस का पता है कि कितना हो सकता है ना, तो उसमें फिर ट्रेल को प्लान करें, ट्रेल कैसे इतना प्यारा गैप। नहीं ठीक है, मैं कह रहा चलो 50-50 भी लगे तो 4-5 पॉइंट आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें 30-20 के मिड बैंड पे से मैं जा रही है जी। Nasdaq decided to touch S1 and go back up. Nasdaq ने लो लगा लिया 563। नहीं अब रेडी नहीं होगा। Nasdaq सिर्फ नंबर की गेम है। Nasdaq में कोई चार्ट नहीं दिखता, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस चलते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ आज, मैं इसलिए Nasdaq देख रहा हूँ क्योंकि उसकी आज मेटा की अर्निंग्स थी, कल को टेस्ला की अर्निंग्स थी और माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग थी। ये 3 कंपनी Nasdaq में। कल भी मैं ज्यादा Nasdaq की बात करूंगा, कल एप्पल की है, राइट। सो Nasdaq नीचे, अभी Nasdaq का बड़ी S1 को देखती है कि ये S1 सपोर्ट है कि नहीं। Nasdaq में एक सेकंड वेट करें पहले। अगर ये ब्रेक हुई तो डाइवर्जेंस तो है, इसको यहाँ S2 के नीचे आने दें। अब फर्क देखता हूँ, एक सेकंड। 5 इधर चाहिए, 510 माइनस 575 डिवाइडेड बाय 7, ये 10 पॉइंट का फर्क आ रहा है यहाँ से। सो यहाँ से 10 पॉइंट पड़ेगा 84। तो अराउंड एंट्री आपकी अराउंड हो ना S1 पे, हाई टू गो अगर लॉन्ग है तो 73 उसका बॉटम रेंज। S2 S1 पे बाय बनेगा ना। इधर S1 हो चुका है, Nasdaq का S1 इज डन, लेकिन अभी ES का S1 नहीं हुआ। अर्ली, आई मीन सेकंड टेस्ट ES का नहीं हुआ। अभी Nasdaq खड़ी है S1 के बिल्कुल अंदर। These are not indicators. Yeah, these are super areas is our company. The website is given. Go check, download it for free. Absolutely 14-day trial for free. And we're not selling you a course, just to remember. एक और मिड बैंड आपको 1 पॉइंट दे गया। Nasdaq तो रेड है तो सेल में ही रहना है, कभी ग्रीन में नहीं, कभी बाय में नहीं जाना। डजंट मैटर कैंडल क्या कह रही है, बाय में जाना ही नहीं है, कोई भी बाय में नहीं होना चाहिए अभी, अनलेस के S1 के बॉटम रेंज की तरफ आती है, क्योंकि उधर S1 हो जाएगा, उधर S2 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है Nasdaq का। और
अब 60 मिनट की नैस्डैक की डाइवर्जेंस मुझे तंग कर रही है काफी ज्यादा। So if you had sold from area and maybe held on to it from area to area, almost 710 से 610 100 पॉइंट गिरी है नैस्डैक हमारे एरिया से। 2 माइक्रो भी लिए होते तो $200 का ट्रेड था ये। इसीलिए जो छोटा अकाउंट है जब आप पीए में चले जाओ माइक्रोस करें। आज भी डे नंबर पूरा मंथ ऑफ जनवरी हो गया, हमारे एरियाज 100% चल रहे हैं अभी तक 100%। So computer predicted Nasdaq should bounce back up from 570 to 590. It went to 563 and bounced back up. Strong support looks like it here. $596. I gotta update this. So as per the Google sheet that I'm sharing it with everybody, anybody who wants, for Nasdaq, R1 is done, S1 is done. कौन सी कंपनी लेके गई आज ऊपर? मेटा। मेटा यस 709 से आई है नीचे। Microsoft is losing its power, but it's almost 6% down. Microsoft कितनी बड़ी कंपनी है जी? $3.3 trillion. And Tesla has lost $30, almost 7%. All right, guys, Apex is 80% off right now. If you use the code JSKDCPTR on our website, Apex is 80% आपके बने ना। ये 5 फरवरी तक सेल लग गई है Apex वालों की। अगेन Apex लाइव ट्रेडिंग थ्रेशोल्ड है प्लीज। तो और उन्होंने पीए की फी बढ़ा दी है, 85 से 100 पे कर दी है। तो वहां से पकड़ लिया, दूसरी साइड से छोड़ दिया। So 80% off means it's $33 to do Apex right now. I think you gotta get muted, my friend. I don't like trolls. Better to block it better than just muting it. They have no idea. Block. Done. Thank you very much. अभी बड़ा चार्ट ग्रीन नहीं हुआ था। So far, my report has been $300 on Apex, 20 accounts, 300 times 20, $6,000 on Apex. Bullnox, $87, 11 point accounts, 50K. That's $962. Legends, $225. Take profit, just 1 point. My funded future, 1 point. Didn't do Perdia yet, didn't do Top Step yet, didn't do others. It's okay. Waiting for area now. Take care, Ajay. No problem.
ग्रीन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ yellow ਆ ਰਿਹਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਆਈਪੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ we don't like that. So renewal date for Win Lifetime students is tomorrow for superareas.com. And we give you a lot of services. It's not much that we ask for, but live stream areas, 24/7 help on super areas, copier help, funded account to run an organization. Motorcycles. ये देखिए मेरा भी इधर हॉटस्पॉट के बगैर येलो ही इधर आ रहा है सेम आप हॉटस्पॉट से करेंगे तो फौरन कनेक्ट हो जाएगा now it's making a divergence to the bottom side लेकिन लोअर लो है 3020 पे 6080 प्राइस नीचे जा रही है मिड बैंड को टच करने के बाद लेकिन स्ट्रेंथ नीचे नहीं जा रही राइट तो अगेन आपका एरिया अभी S1 इधर खड़ा है और शायद इसको S1 के अंदर जाने की ES को जरूरत पड़े This is all three stocks causing this headache Tesla, Microsoft, and Meta. Because they're just to kind of explain you, let me see while that's happening, why this is happening, what's happening. There's a science behind it. यहाँ पे मेरे बैंक की ट्रेड बनती है कितने टाइम से ठीक है रीजनेबल लग रहा है कुछ मुझे गलत नहीं लग सिर्फ मुझे लार्ज ट्रिगर्स 30-20 के तंग कर रहे हैं 30-20 के लार्ज ट्रिगर अभी भी ग्रीन है राइट सो ये सिर्फ मुझे बॉदर कर रहा है लेकिन मिड बैंड 2 दफा तो उसने चलाया है ये टॉप ऑफ द बार चला है
While this is loading, we have no trade that's happening. So give you some basics of Nasdaq and S&P 500. What is it? Why is it important? The earnings. So, and why am I talking Nasdaq today so much? In your trading career, there will be 8 or 9 days of day trading when this is very high volatile market. There are 8 or 9 days where you have to be very careful in the market to make a decision. You know how chapter 1 is about news? News is red to go up, green to go down. Along with it, so we have broken down your news days to, let me just turn dim the light down. It's okay, I got it. Where is he light? वहीं फंसी हाँ S1 के करीब ही फंसी. So first of all, you have the interest rate. This if you see Fed interest rate, that is the day you're just watching the market. You're not trading it. Just because it's so volatile that it's gonna move like bullets, like what you saw yesterday. Another interesting day is CPI. Of course, you have PPI. According to the study that we give you, every red news is big news. But there are certain days, even the brokers will say, let's increase the margin. We don't want to make sure people lose money. They don't want to lose money. They don't want to have it. So they just say you have to have more money in the account to trade these days. So CPI, PPI, then you have employment situation report, ESR. And of course, unemployment claims are important, but again, they generally don't ask you to increase the margins. And the last thing is whenever you see something called non-farm. So these are very, very important news. So these are like the top 5 amongst all. Of course, there is like Chicago consumer sentiment, things like that. But these are the 5 that we always watch out for. That, hey, anything to do with non-farm, CPI, PPI. So whenever these are happening, stay as far away. I call them the nuclear bomb days. They're going to drop that in and your $100, $200, $500 account is not going to matter. Then there are 8 companies that you have to keep an eye closely. 8 companies in Nasdaq and S&P. You, of course, have Apple. Everybody holds an iPhone. You have Microsoft. You're using Windows. You have Tesla. They're all driving the cars. You have NVIDIA, the AI who's getting hammered right now because of Chinese. Then you have another company called Meta that owns your Instagram, that owns your Facebook, that owns your Threads, and that owns your WhatsApp. Oh, so that's Meta. Smart guy, but kind of arrogant. It's okay. Next is your big search engine, Google. Owns YouTube, owns quite a few other things, right? And Android. Android was stolen from from Apple. Steve Jobs was the guy who gave an idea to these 2 guys, and they came out and made Android. So every single person in tech has stolen from somebody else. Just telling you, Bill Gates stole Microsoft DOS, copyrights. Then you have Facebook guys who took the other guys. So you've seen all movies, right? So nobody is innocent. What happens is when they get to the top, they wear those suits and then they're like, oh, we are so philanthropic. We're giving it to this. They're all wolves at the back end, right? If they show a divorce, like Amazon, yes, every single household item you buy
is kind of connected to Amazon. So they're not after anybody. They're not loyal to anybody. They're loyal to their shareholders. So if you buy Amazon as a stock or a Tesla as a stock, they're loyal to those. They're not loyal to, like, look at what Amazon did in Quebec. They tried to do unionize, they shut down 1,500 jobs, right? So they're only after the bottom line called earnings. Every quarter, they want to show more. So what happens is most will cut jobs before the earnings because they want to show the investors that, hey, you are going to basically make more profit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the new player in the club, these were called Magnificent Seven for the longest time, and the new player is called Broadcom, another chip maker. So these, whenever they talk, whenever they open their mouth about their books, now everything is manipulated. If I own Facebook, of course, insider trading, they haven't Securities and Exchange Commission, but against these trillions of companies, look at Tesla. Became in power, made friends with Donald Trump, and look, his Tesla stock went from $213 to $485 within a month because of the corruption. So we have heavy duty corruption here, invest, but they don't bother your electricity. They don't bother your health system. They don't bother your roads. They have given you guys TikTok to watch cat videos. While China, the TikTok comes STEM, science, technology, education, and math, right? So you have to understand how the nations are corrupted over time. That's a philosophical talk. I won't get into it. Look at what British did to Indian natives. They gave them free alcohol. They gave them free everything. Most of them in Alberta are locked up. So when you want to corrupt a nation over 50 years, 100 years, 75 years, give them free. If you look at Britain, they kind of looted everything. Just giving you a philosophical idea, none of these are loyal to you. We only care about their stock price going up or down so we can make our money a smart way. But you have to be aware, in Britain, if you're an immigrant, what they do is they give you more money through social welfare if you rather work. So what happens is over a period of time, you're like, if I work, I will make £1,000. If I stay at home and get so-called social assistance, I will get £1,200. So they paralyze it. And same thing happened with native Indians here. They looked at it, hey, this is our land. What if we give them everything for free? Let's say, so they gave them no tax. So Indian cigarettes were free, alcohol were free, and majority stopped innovating. So the idea is today, if I start feeding you $2,000 to $3,000 a day, maybe 40, 50, out of 50 of you, maybe 30 will say, hey, guy, it's okay. Now we don't have to work. And eventually you're gonna not work, and idea is to not build. So that's why America is kind of good. They don't give you anything for free. You got to earn it. In US, even healthcare is kind of crazy. But that's an other end of the spectrum, capitalism, which is kind of BS as well. Anyway, so whenever these companies open their mouth and say, we are about to talk about our earnings, that is the day you stay away from market. So yesterday, on January 29th, two companies opened their mouth. MSFT, Microsoft, your Tesla, and your Meta. So these three companies had earnings last night. Some were good, some were bad. So the stock moved, and which caused the Nasdaq to move. Look, it's free fall, literally going towards penetrating in S1. Let me see. If it still, we have room to go to S2 for Nasdaq, so I'll wait there. I already don't want to risk on S1. But if you took a trade from anywhere, I think you got a point out of it. C is Canadian USD. 6, what do you call it?
B is British pound, and 6A is Australian dollar. There you go. So wait for S2, guys. So both markets, just like the R1, the gap is low, while the Nasdaq is free fall. So if it's completely up to you, you want to take S1 again, you don't want it, but let the Nasdaq enter the 490 zone, because we still have almost 515 minus 490 divided by 7. We still have about 4 points to fill up the gap. Huge rejection wick. Still not, sorry, I will continue my thing. It's beautiful, and I entered and I am done. I got at the top of the bar. Come on, pick it up. Then pick up my order. There you go. We are in S2 officially, guys, for Nasdaq. There you go. My order got filled. Perfect. You see how you kind of can calculate based on Nasdaq, just to say where the area would be the most beneficial. So I looked at Nasdaq, quickly divided by number, but again, experienced users, not bid band is difficult as is for new users. Stick to your calculation. There you go. S1 is done. S2 is done on this side, and we are done our trade here. Now it's touching the mid band to see if it goes and tests one more time. So beautiful. Almost a point is giving. There you go. I got a point. Yes, sir. डन हो गया. ठीक है, आप एक टिक से रह गए, 2 टिक से. मैं पूरे 25 पे बैठा था. 25 से मेरा एंटर हुआ है. टॉप ऑफ द बार है. लार्ज ट्रिगर्स आर वाइड ओपन. सेलिंग में रहें और आपके 2 पॉइंट बन गए. ये 76 से लिया हुआ है, तो 74 तक मिड बैंड आपका कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था. 76 अभी टेस्ट होगा मिड बैंड 78 वाला. लेट्स सी. अभी 78 वाला मिड बैंड टेस्ट होना है. 78 वाला हाँ, 30-20 का मिड बैंड है. 1-2 आपको पॉइंट मिलने चाहिए. 450. You took an S2? Yeah. Okay, you're done the target? Congratulations. So S2, beautiful, guys. It's in a gap trade. I am entered at 78. Let's see if it goes down from 78. Come on, give me at least a point. From mid band, from 30-20. Anybody took that mid band? Yeah, I did. 78 mid band. Yeah, I did. Okay, 1 पॉइंट ले लिया. मैं कौन ही मैं तो ये पॉइंट लेना था लेकिन अच्छा, चलो कोई बात. 2 पॉइंट पे थी. अब ये जाती है वापस S1 की तरफ. Mean Nasdaq, that's where we are watching. Shot back up. There you go.
that's I only got a point out of it. आपको पता है ना क्या है नहीं नहीं वो क्योंकि 30-20 का जितनी दोनों ट्रेड्स आई नहीं होते $500 का लॉस ले लिया है नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 30-20 का मिड बैंड हाँ जी, लिया हाँ। Okay. No, we don't do Australia USD. No. And Nasdaq went back up to touch the mid band of S1. इतनी volatility आज तेज है अभी इसीलिए मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैल्यू एरिया को टच कर रही है ये Remember, price is not coming from mid-band, from higher high. Remember that. Took the trade from 70 and 80, sorry, 82. All right. You can see 6B, 6C, but not 6A. You can see all the data, but there you don't have areas for 6A, forex pair. We don't do Australian. We just do 3 forex pairs, 6C, 6B, and 6E. बस मैं ये थोड़ा सा explain करने लगा था, sorry. All right, so yesterday were these 3 companies who did their earnings call. And now today, in the evening, we have Jan 30th, and it happens every quarter, every 3 months. So today, who will speak? Apple. And tomorrow, we have Amazon, 31st. And you can say, why is it so important? Because why this is important, what you're trading is S&P 500. So these are, the word is S&P, Standard and Poor 500. You're trading ES contract, and it is March expiry. So that's what you're trading. That means you have 500 companies inside this index. 500 companies. So you're not trading individual, but you're rather trading an index, and it has 500 companies. When you talk about Nasdaq, it has a value, let's say 6,100. I'm going to put a value to it.
and Nasdaq, let's put a value 21,500, for example. So Nasdaq has 100 blue chip or tech stock. So 100 companies are inside Nasdaq index in US. Both of these are US, and the world's biggest index in the world is S&P 500. Then you have Dow, and then so 500 companies. And why was this index created? If you had $50,000 or $100,000 or $1 million or 100 million, doesn't matter, you don't want to buy one single stock. Tesla, Amazon, Google, Walmart, Pfizer, all of these medical stocks, all of these. So 500 companies were put together. They have like a league put together. So you are in the Fortune 500 companies. Just like a league, you have IPL, you have CPL. Teams move up and down, especially the English Premier League. Of course, they can relegate you if you are not performing well. There's a stock called 23andMe. It's heavily struggling in Nasdaq to keep its top, so they keep doing a buyback option or something like that. So it is difficult to stay inside Nasdaq or S&P if your company is not worth at least 100 millions or so in order to stay in it. And every company wants to stay inside the S&P or Nasdaq. So 23andMe is having quite a bit. So they did a reverse split to stay inside. Anyway, so we are trading this. However, 75 companies are combined in both of these. So if Amazon is here, Amazon is here. If Tesla is here, Tesla is there. Google is here, Google. So all of these companies together move the markets. Their stock price moves the market. So the underlying, what you're trading S&P 500, it could be Microsoft stock price moving it, or Tesla options, things like that. So that's how the price movement, it's not just they're trading futures strictly, but the stock price of a certain company can move the price of futures absolutely in that same direction, up or down. Now, if you were to do the math, if a company, let's put a value to it. If Nasdaq had a value of 20,000 US dollar per one index dollar, let's now list this. Apple. Then you have MSFT, Microsoft. Then you have NVIDIA. Then you have Google, Amazon, and give me a second, sorry. NVIDIA, Amazon, Meta, and Broadcom. So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's put it at Tesla, because that guy owns the government. So Apple is valued approximately 9%. Microsoft is 8.5%. NVIDIA is 8%. Google is 5.5%. Amazon is almost 5%. Meta owns 3.4. Let's do 4. And Tesla, do 3.5. And Broadcom, you can do 4. So these 8 companies combine, they change the value. They own almost 50% of Nasdaq. So if you removed these 8 companies from Nasdaq, your 50% value disappears. So you can turn it on. Yeah, that's better. So Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon. So I'm giving you absolute
basics, absolute basics, that you're trading S&P 500 futures. There are 500 companies. Okay, no problem. Nasdaq, majority people trade that. That's 100 company, moves fast rather than 500, but 75 companies overlap. Tesla is, so whenever Nasdaq, so why the whole speech here or lecture on why today is kind of crazy? Because yesterday, these three companies decided to say, hey, we made money or we lost money. So whenever you have these 5 days, especially, and then you have earnings, market is going to go crazy the next day. Now, tonight is Apple. Because remember, they are trillion-dollar companies. Like Microsoft, Apple has more money than the GDP of India, a full country. So two companies own that much. Tesla went to $1 trillion lately because of friendship with Mr. Donald Trump. So why am I not surprised why it's happening today? Is because the market has a lot of volatility. Now tonight would be Apple, then it would be Amazon, and then we have the other ones, Google, and then the Nvidia. Nvidia, when moves, it shakes. So if you were to take $20,000, the value of 20,000, 50% is owned by these 8 companies. So that is stupid, in my opinion, because if 8 companies, and earlier Nvidia was deciding the price of the US futures, right? It's kind of crazy. So tomorrow what will happen is we'll watch again Apple, we'll see how Amazon, so stay away from trading around that time, especially after 4 o'clock today. Market is open from 4 to 5. Yes, futures are open, but earnings call will come in and you will see the charts move rapidly, both directions. So if you're long, so today, please don't trade. And in the evening sessions too, the after effect will come. The Singapore, European sessions, and investors will be saying, is it too low to buy or too high to sell, right? So that's how world moves around these 8 companies. If they decide, like Nvidia went down, brought $1 trillion down, 16%. So they are big boys, the big 8s now, magnificent 8 officially. So now we will watch for, let's see what happens. And this mid-band worked, beautiful. Give you 2 points in that. 2 points here, a point here, it adds up. But reversal is supposed to be done soon by 11. Now this candle will close in about 12 minutes. So beautiful mid-band trade. Everything was green. So we go green to buy, red to sell. That's it. There is no change. Only thing was it was not coming from a higher high. That was the only, out of the 5 conditions, that was the only condition not matching. So your both charts were green, large triggers are green. It's not an area, it's not a divergence, just didn't come from a higher high. That's the only out of 5. But when 5 are aligned, that's the highest probability. In this case, 4 were okay, but you still, the mid-band worked. I still think Nasdaq wants to go to expected low because of the bottom range of expected low is almost 21,300. कौन से एरिया चल गया जी आपका S2 भी डन हो गया, S1 भी डन हो गया, R1 भी डन हो गया. अब हम वेट कर रहे हैं R2 का और S3 का. S2 kind of didn't go finish for your ES yet. ES में अभी गैप था लेकिन Nasdaq में गैप नहीं था. तो नहीं स्ट्रगल Nasdaq कर रही है. Nasdaq का समझ नहीं आ रहा इन तीनों स्टॉकों ने कहाँ जाना है. एक माइक्रोसॉफ्ट नीचे पुश कर रहा है, उधर आपका टेस्ला जो है, एक सेकंड देखिए ना, एप्पल भी नीचे है, Amazon भी नीचे है, माइक्रोसॉफ्ट तो 6% नीचे आ गया 416 पे.
$26 एक स्टॉक वैल्यू उड़ गई ना, तो 22 मिलियन आज जो है ना स्टॉक्स एक्सचेंज हो रहे हैं. TD is up, Broadcom is up almost. So Broadcom is pushing it up while Nvidia is pushing it down. Nvidia वापस 119 पे आ गया, almost 123 से जाके दोबारा. Why is Nvidia stock taking a hit? हाँ, लेकिन अभी इन्होंने AI ने कहा है कि इन्होंने हमारा स्टील किया है. हमारा जो चैट जीपीटी ने क्लेम किया है कि उन्होंने हमारा ट्रेनिंग मॉडल लेके स्टील किया है, राइट? सो it's a trade war. So trade war is a pure technological war, and as the tech guys, we enjoy it because we kind of know the technical language about it. So only guy doesn't seem happy with this TikTok thing is Microsoft. I mean, sorry, Meta, because they're losing their budget. Like on our ads, we spend $5,000 on our TikTok ads. Right? It's a great platform. We spend on Instagram much less. So looking at user behavior, we have the biggest audience and coming from TikTok, right? Because with Facebook, you follow your friends and you see what your friends are doing. And trends coming from TikTok, right? So trends, so their algorithm, so anybody saying bad about algorithm is like they have no idea what they're talking about. Algorithm just means if they can analyze the data. And so this is an algorithm that you're using that is analyzing the data to give you the best possible scenario, right? So so TikTok is a big pain in the butt for American companies, right? If Oracle wants to buy it, maybe possible. Let's see. सर फुल थ्रॉटल से नीचे है, वो वापस S1 में ले आए हैं. वो Nasdaq को तो गिरा ही जा रहे हैं. वो अगेन कौन सी कंपनी? Nasdaq ने ही सारा कुछ चलाना है आज. देखिए ना, उधर से वो गिरी, माइक्रोसॉफ्ट गिरा रहा है जी फुल तेजी से. $27-28 गिर गया है. तो Nasdaq जाती है नीचे, ES को साथ ले जाती है. तो आज तो कोई ट्रेंड्स उस तरह मिड बैंड वाले जो है ना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि Amazon भी अभी गिर रहा है. $2-2.5 वो गिर गया है. सिर्फ मेटा ऊपर गया है और वो भी नीचे आना शुरू हो गया. तो कल भी ऐसा ही होगा. कल एप्पल वर्सेस एक दफा और उसने S2 टच किया Nasdaq का. It is covered by Apex, everything else. We just don't have an area. You can trade Australian USD 6C or 6A, but it's just we only give you areas for 6E, 6B, and 6C. So Euro USD, British Pound USD, and Canadian dollar versus USD. Yeah, but data is coming. All the forex data on all 6A, B, C is all coming. तो ये नाइट सेशन पे फिर रही है जी. 6073 है ना आपका? क्या है? 6061. Very close. 60.
फिर पेनिट्रेट S2 को कर जाएगा। लेट्स सी, नैस्डैक तो S2 से बिल्कुल निकल गया जी बाहर, एंड इधर ES आ गया S2 की तरफ। ES is between S1 and S2. Nasdaq is in S2. Next question. It's a big gap from expected low. Almost 490 minus 350. So almost 140 divided by 7, 20 points. So 6062 minus 20, 6042. So 35. Yeah, that's good. That's good. आ गया जी, ये भी आपका ES के अंदर आ गया जी, ES भी एक्सपेक्टेड S2 के अंदर आ गया फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ी कैंडल, और कैंडल ये 3 मिनट में पूरी हो जानी है। अभी यहीं से बाउंस हो गया, एरिया खत्म हो गया, एरिया डन हो गया। तो 6.5 में आपने बाय करना था, 6.4 पे, अब एरिया कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था 65 से लेके 62 तक अगर आप बाय करते तो आपका ट्रेड डन हो गया जी, आपको 2 पॉइंट मिल गए S2 से। सो ES S2 इज डन गाइस, और अभी भी जा रही है वापस। तो S2 स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि S1 और S2 का गैप बहुत कम है, अब दोनों सिंक हो चुके हैं। अब Nasdaq और ES इज 100% इन सिंक। तो अगर आपने सेल बाय किया था अगेंस्ट द ट्रेंड, इसलिए हम बिगिनर्स को एरिया नहीं देते, क्योंकि आप कहेंगी कि बाय क्यों किया, दोनों रेड थे, बाय क्यों किया, नहीं सपोर्ट पे आ गया एग्जैक्टली। तो इसलिए हमने बाय किया था, क्योंकि कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था हमारा कि 65 से 62 के दरमियान अगर आज की प्राइस आ गई तो इसने बाउंस कर जाना है, ये कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया है। और अगर आपने 65 पे एंट्री ली है, 64 पे ली है, 63 पे, अब जिसने 62 पे बैठा हुआ था वो मिस हो गया ट्रेड। सो आप बॉर्डर लाइन पे बैठेंगे, अब ऊपर जाते वक्त भी। तो इन दिनों में जिस दिन हाई वॉलेटिलिटी है और एरियाज का गैप कम है, तो R1 S1 स्किप कर दें। तो क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी तेज है कि S2, अभी Nasdaq S2 को भी पेनिट्रेट कर रही है। So guys, S3 is only valid for Nasdaq and ES right now. Rest of the trades are done. लो जी, 531 का टारगेट पूरा हो गया। गुड, एपेक्स का पर अकाउंट। So 531 V 10,621. Easy. I think you missed my first day orientation, right? Okay. आज पहला दिन है, राइट? तो आपको मैं नहीं हुआ ये कि वो मंडे को जब जिन सारे इन्होंने ग्रेजुएट हुए थे क्लासेस में से, उन्होंने आए ना, तो अब आपको मैं दूंगा मंडे को। अगर आप मंडे को सुबह आए ना, तो मैं आपको डे 1 की, सिर्फ फ्राइडे आ सकते हैं नहीं, फिर आप हमारे लेक्चर सुन लें, जो रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, वो यूट्यूब पे चले जाते हैं। तो इस मंडे की जाके हमने जितने कर रहे हैं सारे अपलोड शाम को हो जाते हैं, लाइव जा रहे हैं ना, तो वी कैन। हाँ, सुपर एरियाज में सर अकाउंट पे डिपेंड करता है। मैंने जो एपेक्स का 3 लाख वाला अकाउंट है उसमें मैंने ज्यादा मैंने किया, और जो मेरे पीए चल रहे हैं लेट्स लेजेंड वगैरह, वहाँ 5 MNQ कर दिए, 2 MES कर दिए, कि 1500 के अकाउंट में वैल्यू नहीं है ना। तो अगर मैं उधर तो माइक्रो ही करने हैं ना, ईए में, पीए में तो उसको स्लो लेके चलना है। ईए को जरा आप थोड़ा सा तेज कर सकते हो, क्योंकि 30 दिन में इसको फिनिश करना होता है।
लेकिन कंप्यूटर, so anybody doing FTMO right here, they ask me, so okay जी आप FTMO नहीं करते, CFDs नहीं करते, forex नहीं करते, यही नंबर चलते हैं उधर भी। हमने जो कंप्यूटर ने प्रेडिक्शन दी होती है कि यहां से बाउंस करनी है, आप FTMO खोल लो, जो भी प्राइस चल रही हो हमारे नंबर पे बाय कर दो, तो आपका स्प्रेड फर्क होता है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। सबसे आगे फ्यूचर चलती है, फ्यूचर से आगे कुछ नहीं है। तो इसलिए हम फ्यूचर पिक करते हैं, क्योंकि S2 पे आई, आपने FTMO खेला, जो भी प्राइस थी आपने लॉन्ग कर दिया, और वो आपको 20 पॉइंट उधर मिले, 20 उधर मिले, FTMO भी पास हो गया साथ, राइट। सो इसलिए हम लोग फ्यूचर्स को प्रेफर करते हैं कि सबसे आगे चलती है, सबसे आगे, इससे आगे कुछ नहीं है। वो फिर CFD आएगा, फिर कैश आएगा, स्पॉट आएगा, जो भी है, लेकिन लोग FTMO इससे पास कर रहे हैं। हमारे एरिया देख लेते हैं, अब हमने नई वेबसाइट भी बन रही है जो सिर्फ और सिर्फ एरियाज देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, चार्ट्स नहीं चाहिए, नंबर्स चाहिए। वो कहते हैं यार सिर्फ ES का एरिया दे दिया करो, नैस्डैक का दे दिया करो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये 2 मार्केट्स आपको $50 में मिल जाएंगे, दैट्स इट। अगर आपने 10 मार्केट्स लेनी है तो 150 में मिल जाएंगी। कुछ लोग हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं, कुछ लोग हैं उनके अपने इंडिकेटर्स हैं, वो नहीं केयर करते कि हमें हमारा एल्गो देखना है या हमारा, उनकी अपना मैकेनिज्म है, राइट। लेकिन उनको नंबर हमारे चाहिए होते हैं, क्योंकि जितनी पावर हमारे नंबर्स की है बैक, और 18 साल से है, एक दिन नहीं है। आज भी नंबर दिए और चेंज नहीं किए। आज हम देखें, कभी जिंदगी में हमने नंबर क्या के चेंज किए हो? नहीं। सुबह देख लें, शाम तक हम वही नंबर रखते हैं। हमारे कंप्यूटर ने सिग्नल दे दिया सुबह 9 बजे, हमारे एल्गोरिदम ने दे दिया कि भाई यहां से आए ना तो बाय करना। लोग कहते हैं यार मैं सिग्नल ग्रुप में बैठा होता हूँ, टेलीग्राम पे बंदा मुझसे $50 लेता है, मुझे ES का बता देता है। एक है ना आर्ग्यूमेंट, हम कहते हैं भाई ES भी नहीं खाली देते, वो गोल्ड अंदर उन्होंने बैठ के किया, रियल अकाउंट $1 लाख बैठे हुए जुनैद भाई असल में आके कहा गोल्ड एक्सपेक्टेड हाई पे है। मैंने कहा अगर बेचते हैं तो वो एरिया लिया, पैसे लिए, फिनिश। देखिए नैस्डैक कितनी तेजी से आ गई जी अगले एरिया की तरफ। लेट्स गेट रेडी। S2 को पेनिट्रेट कर गई है, तो हाँ जी आन दो सर, थिल्ले आन दो। अगली कैंडल आज 60 मिनट वाली खूनी खुली है, 3 मिनट होए ने, ऑल द वे 21,300 तक आ सकती है, याद रखना, क्योंकि 60 मिनट का लोअर बैंड 21,300 है नैस्डैक दे विच। अभी तो ये एरिया को मिड बैंड टेस्ट कर रही है 6064। Let's see if this candle goes back to test the area or goes down. Nasdaq का कोई मूड नहीं बन रहा जी ऊपर जाने का, 434 पे आ गई। Let's analyze this and give the job to the computer. Human brain sucks at doing mathematical calculation that fast. So आपकी S2 भी डन हो गई Nasdaq की। अब 300 का नंबर सेन में रखें सर, सेफर। मिड बैंड 30-20 का नहीं अभी पिक हुआ, अब हुआ। लेट्स सी, देखें, लेट्स सी लार्ज ट्रिगर्स और पिंचिंग, 1-2 पॉइंट की तो गुंजाइश होनी चाहिए इसमें। एक पॉइंट दिया, ठीक है। ये आज मिड बैंड वाला थोड़ा रिस्की हो रहा है क्योंकि अर्निंग्स की वजह से। 2 पॉइंट आगे जी आपको 30-20 मिड बैंड। लो जी अगला कहाँ चला गया? कल मैंने आप लोगों को अपने सारे अकाउंट दिखाए थे, आज भी लो जी ला दिए नजर। नहीं मैंने कल जाके ना लॉग इन करके देखा अपनी वीडियो, वो नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल। वो एक तो कैमरा 1080 का है, स्ट्रीम है, स्ट्रीम के आगे ये 8 फुट का डिस्टेंस है। मैंने कहा बचत होगी।
लेकिन वो मैंने 4K में जो रिकॉर्ड किया था उसमें से मेरा PA का यूजर नेम निकल गया था. Because if somebody gets a hold of your username, password on TradeOwait, they can mess it up, right? That's the key point on that. Because they can just log into their account with that username, password, and they can start to trade. And if you share your username with somebody, Apex will find out. Now I'll tell you, this is what happened with us. You know, Tick Trader, I just got approved by them. We can start promoting it. So I will. So with Tick Trader, when we were testing after fast track trading, so many people got approvals now. Murtaz got approval, things are coming. They were straight to funding. So I get an email and I'm like, you have these like 60 users or so. And they're probably, I don't think 60, sorry, six users are logging in from the same IP address. So they get a hint that somebody is trading your account, they will ban you for life. Perdia is the worst for that because it's a straight to funded. So they all have built in. So if you, for example, there are many companies sitting in the world who will trade your funded accounts. Or when you are AMP futures, they can find out if it's you trading. When you are doing AMP or GFF, you sign a legal document. I will not give this username password to somebody else. So, and remember, everybody just goes down and says, I agree. You're agreeing to a lot of things. Like, so just make sure you are agreeing that you will not, the moment, because what happens is every ninja sends like an order ID and quite a few information is sent to an exchange. So these guys who are giving you funded accounts, they find out that you are sharing your username and password and things like that, and they can deny payouts. So we've had some issues. Now Apex wants you to make a video now. So Apex says, all right, you got 10,000, 5,000, 4,000. Make us 3-day video that record yourself. Hey, we are. So when Tick Trader sent to us that, hey, why are your users logging in from one IP? So we then sent, hey, we are an organization. We have 12,000 users. We have true trading floors. Of course, you will all log into TradeOwait from same IP, right? But so they make an exceptions, right? But if they figure it out, hey, this person is somebody else is trading, so expect it denied. And even GFF will block you for rest of your life and say, we don't want your business. So because this account sharing thing is they will ask you so many questions, your machine ID, your ninja ID, your IP address, your subnet. So FTMO doesn't care. I think FTMO doesn't care. But हाँ, आप फोन पे कर ही रहे हो. फोन पे तो किसने डेटा देखना है. इस मिड बैंड में से आपने लिए 30-20 में नहीं? और आज सारा कुछ डाइसी है. बर्निंग्स की वजह से तबाही फिर रही है नैस्डैक की आज. $60 minute में triple divergence आ गई है. It means कि price is not going to back up to R1 or triple divergence है. कोई भी बीज ऊपर नहीं गई. So we have a very strong chance that it could go to expected low. So high to go low was his thing. Pressure is down. So stay in short. It can change. Pressure can take any time, but so price has gone to, what's the lowest point? 460, 434 and 461. Yeah, 434. So 310 point moves since 748. Almost, let's do 750 and 430. Almost $320 move. सर मिड बैंड चल गया अभी भी. मैंने बड़ा प्यारा चला है.
30-20 ਦਾ ਸਰ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 66 ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ग्रीन वाला इधरों ग्रीन चलिया उधरों रेड चल गया उधर मैजेंटा भी चल गया अब लार्ज ट्रिगर सिर्फ जो है ना ग्रीन है बाकी चार्ट अभी एनी टाइम चेंज हो जाना है सर अभी है रिस्की क्योंकि इधर जो है ना ग्रीन मेरे हिसाब से सिर्फ ट्रिगर ग्रीन हुए हैं ट्रेंड नहीं हुआ लेकिन जिसने पहला रिस्क लिया वो तो ले लिया ना वो तो 15-10 क्योंकि S2 पे खड़ी है एरिया तो इनवैलिड है लेकिन एरिया बड़ा अच्छा चला 63 से 65 से 62 वाला हाँ पॉसिबल है पॉसिबल नो नो 80% आपका वो चलता है हाँ कि 80% उसके दरमियान में रहती है कि R1 से S2 लेकिन अभी नीचे आ गई का नहीं 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 वो पिछले वो डॉटेड लाइन है वो देखें बड़े चार्ट पे लिखा हुआ है 6082 ऊपर वाली एक येलो लाइन जा रही है 30-20 पे चेक करें अच्छा नो प्रॉब्लम अब उसने वैल्यू एरिया के बॉटम से टच किया 6059 से आई और ऊपर चले गई तो उसने एरिया कल का वॉल्यूम भर दिया है सारा So now I'm not going short or long until I get to an area. कुछ लोग हैं पीए मिनी से ही करते हैं और जब तक प्राइस एक्सपेक्टेड लो एक्सपेक्टेड हाई में नहीं आती ना वो अगर हफ्ते में एक दिन आए वो एक ट्रेड डालेंगे आपको लेकिन वो 300 का ट्रेड निकाल लेंगे देखिए दो रीजन है आपके पास दो मेथड्स हैं आपके पास ट्रेड का एक मेथड है एरिया है कुछ लोग इतने डिसिप्लिन है कि जब तक प्राइस एजीएस की एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो पे नहीं आएगी ना पीए टच नहीं करेंगे ही नहीं क्योंकि लेना उन्होंने मिनी से है ठीक है उन्होंने 1500-1600 बनाना है तो वो 5 पॉइंट ले लेंगे उस जोन से तो वो R2 R3 गैप छोड़ते रहेंगे क्योंकि वहां से आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाती है ना R1 R3 एंड S3 तो देखा ना अभी नहीं हुआ मुझे अभी 6057 को तोड़ना है इसने होपफुली नैस्डैक तो जा रही है अपने नीचे 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 कैंडल का रुख नीचे की तरफ है तेजी से फुल और फ्री फॉल होता है जी आप सेलिंग पे पैनिक लोग शुरू हो जाते हैं सेल का बटन दबा देते हैं वैसे 11 o'clock हो गया आपका जो भी कमाया है सब कुछ डे इज ओवर माइक्रोसॉफ्ट नहीं रिकवर कर पा रहा अपने आप को अमेजॉन भी डाउन है एप्पल भी डाउन है एनवीडिया भी डाउन है
मिड बैंड ठीक गया जी, नहीं हुआ, नहीं इधर से हुआ 1510 का जी, नहीं 61 65 तक गया है। नाउ 30-20 में समवट डाइवर्जेंस है, स्ट्रेंथ जो है ना जा रही है जी। नैस्डैक अपनी पूरे जोश से नीचे, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की स्विंग लगाई है इसने एक घंटे में, R1 से S2 के भी नीचे नैस्डैक ने। ब्लैक कैंडल आएगी तो डाइवर्जेंस की लाइन होगी 30-20 में, लेट्स सी। नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, 10:11 से 15 मिनट तक टाइम। Nasdaq is trying to go back to S2.
Nasdaq is heading into S2, guys. So let's see if it touches and bounces down. 510 is the number to watch for. There we go. It's touching S2. If it goes 70 points, $83 minus 70, that's 13 times 791. If Nasdaq goes to S1, we will have ES to go to 6083. Let's see if it breaks 510. Yeah, STEM, science, technology, engineering, and math. If I were to short Nasdaq, I would do it at 570. The R1 सर्जी S1 का ऊपर, क्योंकि वहां पर खड़ा है मिड बैंड 60 मिनट का, वो S1 जो है ना, तो नीचे से अगर ये पेनिट्रेट करती है तो यहाँ से 100 पॉइंट चाहिए इसको वहां पहुंचने के। 513 तो हो गए हैं, 70 पे बैटर बनती है ना, यहां से सेल करेंगे तो वो हो चुका है ऑलरेडी, टॉप पे नीचे है, तो 70 पे सेल कीजिएगा, ये फिर वो स्विंग बहुत बड़ी हो जाएगी। 419 से आ रही है, हाँ 419 से 570 का एनफ ओवरबॉट हो जाएगा, तो 570 से सेल बनता है एग्जैक्टली तो मूव बहुत बड़ी है। लेकिन अभी तो 510 को देखते हैं ना टूटती है कि नहीं। हाँ हाँ, तो ये अभी निकल रही है ना S1 के, S2 से बाहर निकल रही है आज सर। नैस्डैक इसकी वजह से, ये तो पीछे चल रहे हैं ना, सिर्फ नैस्डैक उधर, वरना मुझे ईएस, अगर आपने नैस्डैक 570 से शॉर्ट की तो ईएस आपको पुट हो जाएगी 6082 तक। तो अभी पीछे फर्क रह गया सिर्फ 50 पॉइंट का, 50 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट इधर, तो 6072 प्लस 7 या 6079 तक आ जाएगी बात। ये कैंडल बहुत तेजी से वापस आ रही है जी। नहीं, ट्रेल कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात। अब एरिया के अंदर आ गई S1, 20 पॉइंट तो बनता है यार आपका एटलीस्ट एरिया से, क्योंकि S1 कहाँ से आ रही है, ऑलमोस्ट S2 S3 के दरमियान में से आ रही है, 419 से आ रही है, तो 570 को उसको थोड़ी ब्रेक तो मिलेगी। ये 570 पे आ गई तो वो 6082 तक आ जाएगी। ये फर्क देख लेना, आ गए जी 570 पे, 6085 से 570 माइनस 540 डिवाइडेड बाय 7, 4 पॉइंट, तो 6076 प्लस 4, ये 6080 तक आ जाएगी।
ट्रेल करें अगर आप कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल, ऑटो ट्रेल करें जी। 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट मिले हैं। 605070 आ रही है गाइस, ओनली 20 पॉइंट का फर्क रह गया। अब ये थोड़ी सी सांस लेके 70 पे बैठे हैं जी, उससे पहले रिस्क ना लें। 70, 90, 80। कंप्यूटर कह रहा है बाय करना है तो 70 पे करें या 71 पे। एक टिक से रह गया मैं यार, एक टिक से रह गया। मैं 6072 पे बैठा हुआ था, बॉटम ऑफ द बार आई और निकल गई जी। मैं 72 पे बैठा था, वो एक टिक से मुझे उसने ऑर्डर नहीं पिक किया, वरना ये 2 पॉइंट थे मेरे। अर्ली नहीं जाना ट्रेड में, अर्ली नहीं जाना जब तक ट्रेड, और अपनी फीलिंग पे नहीं जाना कि मुझे लगता है यहां से ग्रीन होगा स्टार। हाँ मैं छोड़ दिया ट्रेड। नहीं, अगर मैं पता कहाँ ले गया हूँ, ऑर्डर उठा के 70 पे ले गया हूँ। अगर मैंने बाय किया ना तो मैं नीचे ले आया हूँ, बहुत नीचे ले आया हूँ। हाँ नहीं, क्योंकि मैं अपना ऑर्डर नहीं 72 पे मैंने ऑर्डर लगाया था, वहां आई नहीं, 72-25 से चले गई। अब मैंने अपना ऑर्डर देखें उठा के ये नीचे कर दिया, क्योंकि मैं कहाँ ले आया हूँ 30-20 के मिड बैंड पे, मिस हो गया ना एक टिक से। तो अगर नहीं ऑलवेज ए डिफरेंस। देखिए जनरली 15-10 का लेना है आपने, लेकिन अगर मिस हो गया तो फिर 30-20 पे ले जाऊंगा। अब यहां पर जिसने 25 से लिया वो तो ऑलरेडी ले गया ना 2 पॉइंट। तो नहीं, अभी अगर आप 72 पे बैठे होते तो 3 पॉइंट मिल गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह मैथ किया है। अब ये जाएगी सर, यहाँ लिक्विडिटी शायद नैस्डैक की क्रिएट हो गई है, तो 570-90 अगर यहाँ से पुश हो गई ना, लेट्स सी, मिड बैंड ऑफ 60 मिनट इज एट 580 फॉर नैस्डैक। बड़ा प्यारा ट्रेड बना मिड बैंड से, लेकिन एक टिक से रह गया। कोई बात नहीं, चला गया जी, प्राइस वापस ग्रीन में चली गई। कितना है? नो सर, 100 पॉइंट लिया है, मजा आया ना। एक माइक्रो से $200 निकल गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। देखें, एक माइक्रो से आपने 100 पॉइंट लिए हैं, वाह अमेजिंग मैन। अभी भी नहीं देखें, आपका 900 काउंटर नहीं होता, क्योंकि अभी आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। नहीं, आप जहां से भी करोगे ना, वहां से 50% चांस है सही जाने का। तो ये ट्रेड काउंट नहीं होगा रियल मार्केट में, रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंट। All right, we are getting into the R-S1 zone, guys. 570, 590 risk begins, but if it crosses 605, I think it's maybe your stop loss may hit. So 570, वो 560 आ गया जी, and value area one more time fill हो रहा है।
6081 सर ये वैल्यू ये 30 मिनट्स में देख रहा हूँ ना मैं 30-20 के चार्ट में। नहीं 30-20 पे। स- 84 था, एक डॉटेड लाइन जा रही है 30 मिनट में, 30-20 में। लो जी, एरिया आपका डन हुआ कि नहीं? कहाँ से आ गई? 570 से नहीं आपने ऊपर ले गए थे, पूरे 69 से वापस गई है जी। अब ठीक है, तो 70 का एरिया हुआ सर। नहीं लिया, देखिए जो कंप्यूटर ने मैथ दिया है वो तो चला ना। नहीं नैस्डैक ने 70 को टच किया और वापस आ गई, और आपको ये दे गई है 20 पॉइंट दे गई है 70 से। अब सर ऊपर नहीं अभी भी ना मैं 590 को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस हो गई ना। तो अब 570 पे किसी ने भी उस अराउंड सेल किया ना, दे आर डन। और इधर मिड बैंड चल गया जी, अगर किसी ने मिड बैंड 1510 का लिया है, 76 पे हमारा मिड बैंड था ईएस पे, तो चला गया। मैथ इफ यू डू विद 7 to 8 पॉइंट नैस्डैक और ईएस का ना, तो आप उसकी मैथ निकाल सकते हो। वो पूरा, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि S1 इधर का स्किप कर जाएं, क्योंकि उसका S1 दूर है और नैस्डैक कंट्रोल कर रही है आज। तो अब वो 570 पे जिधर भी है ईएस को उधर से शॉर्ट कर दें। नहीं वो नहीं चले ना, क्योंकि अच्छा ठीक, ओके बिगिनर्स के लिए नहीं, एडवांस के लिए। लेकिन नैस्डैक की जो मूवमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली एक आपका मूव होती है ना, यानी इज 7 से 8 पॉइंट, इधर $1 है अप्रॉक्सीमेटली $1। तो अगर नैस्डैक चली गई 570 पे, ठीक है, ईएस जहां पर भी है, आज नैस्डैक का दिन है अर्निंग्स की वजह से, ठीक है, तो आज अर्निंग्स है, तो ईएस अगर आपने फेंक दी उसी पॉइंट पे, तो अगर आप सुने तो मैं कह रहा था कि ईएस का एरिया S1 स्किप कर दें, ठीक है, नैस्डैक को फॉलो करें। नैस्डैक गई 570 पे, वहां से बाउंस डाउन हो गई, ठीक है। अब वहां से क्योंकि बाउंस डाउन हुई है, तो जहां पर भी ईएस थी उसी के साथ चल रही है, राइट। तो आज कल परसों नैस्डैक की मोमेंटम ज्यादा देखें रेदर देन आपके, क्योंकि अर्निंग्स हम नैस्डैक की देख रहे हैं। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾर्ट खोल के देख लो, बिल्कुल नैस्डैक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾर्ट है वो इधर गिरता है तो नाल ही गिरना शुरू हो जाता है। मैं कर देना थोड़ा सा, लेकिन इधर ईएस का मिड बैंड आपका ग्रीन था, चल गया। लेकिन ये 570 से किसी ने सेल किया, आई डोंट नो, आई डोंट नो, देयर यू गो। अगर ये अब कैंडल 50% आई ना इसकी, तो अगली कैंडल आपकी चलनी है 25 मिनट बाद। तो S2 शायद आपकी अब सपोर्ट बन सकती है, ऊपर से वापस आ रही है ना, तो S2 देखते हैं सपोर्ट बन, ये 490 से 510 वाली ना, लेकिन अगली कैंडल खुलने में अभी टाइम है। नहीं देखिए, नहीं मैं नहीं, देखिए हर, देखिए 15 मिनट बाद एक जो कैंडल आएगी, 30 मिनट बाद और 1 घंटे बाद, तो उतना टाइम। अब अगली जो कैंडल है, जो 15 मिनट वाला चार्ट देख रहे हैं, वो 11:45 पे आएगा। जो 1 आवर वाले कैंडल्स देख रहे हैं वो 12 बजे आएगा, राइट। तो मैं इस तरह टाइम देखता हूँ कि इतना टाइम रह गया अभी 25, मैं क्योंकि 1 आवर का कैंडल देख रहा हूँ, तो 24 मिनट्स के बाद उसकी नई कैंडल खुलेगी। 30-20 का मिड बैंड टेस्ट हो रहा है जी S1 के ऊपर।
मेडी जी आपने लिया 570 के इर्द गिर्द नैस्डैक ऑलमोस्ट 20-50 नो 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 कोई, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट बड़े की हो रही है, बाहर बैठे दोनों चार्ट सेम होंगे तब आपने सेलिंग बाइंग में जाना है। ये 30-20 का मिड बैंड आपको 2 पॉइंट दे गया जी, 73 से 75 पे आ गया, 3 पॉइंट दे गया, 4 दे गया जी, क्योंकि नैस्डैक ने इनफ लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हिट करके अब ये 590 की चांस है कि तोड़ जाए। अगर ये स्पीड से आई ना सर, पहला स्टॉप एदा बनेगा अप्रोक्सीमेटली 670 पे। 670 पता की है 60 मिनट की पिछली तो पिछली कैंडल दा टॉप है। इधरों अगर रुक चली ना, अगर 60 मिनट का चार्ट देखोगे ना, पिछली कैंडल का जो बिल्कुल जिथे बार बंद हुई ना 60 मिनट वाली, वो 600 इस वेले मैं दसदा है वो 674 ते हैगी है। नहीं 1 आवर देखो, एक घंटे की कैंडल है ना, ये सारी मूवमेंट एक घंटे दी। हुण जेड़ी ए करंट कैंडल चल रही है 60 मिनट्स वाली, जेड़ी मैं एरिया में देखदा है, वो तुसी देखोगे ग्रीन चल रही है, ठीक है। इन्हें पहले एरिया टच किया, हुण अगर ये 590 तो निकल गई ना, तो इन्हें पॉसिबल है कि जाके 670 नु जाके पहले टेस्ट करना है, लेकिन यदि 50% कैंडल लेनी है। एक सेकंड, 675 माइनस 663 463 465 ला लेने, 210 डिवाइडेड बाय 2 105 105 बनेगी 674 माइनस 105 569, वो एरिया ही बनता है, हाफ कैंडल से बाउंस डाउन हुआ है। अब आपको एक काइंड ऑफ इजी ट्रिक बता दूं, जो लोग प्योर, हाँ नैस्डैक देखिए, कैंडल एक बनी पहले वाली, ठीक, जो रेड कैंडल थी 1 घंटे की, एक ये नंबर था 674, ठीक है। इसका लो देखें जाके बनी 400 मैं एक सर मैं नहीं इसका लो था 460, एक नंबर फड़ लिया 675 ते 460, ए डिस्टेंस आया 1 आवर दी कैंडल दा है 215। एदा मिड देखो, मिड की बनता है 105, चलो 105 ला लो, ठीक है। हुण मजे दी गल देखो, वो कित्थों बाउंस हुई, जेडी ग्रीन कैंडल बनी ना, बनदे 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 इत्थों मैं बाउंस हुई, बिल्कुल ओदे 50% तो उन्हें रिट्रेस ली, हाँ एदा मिड तो उन्हें ली, ते इस वास्ते 60 मिनट 30 मिनट कैंडल्स इंपोर्टेंट होंदे ने छोटे टाइम फ्रेम वास्ते। मिड बैंड ते असीं लै रहे हैं, लेकिन जेडे लोग नैस्डैक करदे ने ना, वो कैंडल्स नु वॉच करदे ने, मिड बैंड नहीं देखते, ओदा मिड बैंड ते है ही कुछ नहीं, राइट। ते लेकिन मैथ देखो इतना प्यारा है, 675 माइनस 460, ए बने 105 दा मिडल आया। अगर इत्थे दी प्राइस देखो, ए ली प्राइस तुहानू 569 तो बाउंस डाउन कर गई एग्जैक्टली, जेड़ा साडा एरिया से, या सो दैट वाज प्रीटी कूल। आज हुण 500 इनू जान दियो 674 तक, अगर ए कैंडल इत्थे ब्रेक कर गए ने 590 वाली, ते अगला रेजिस्टेंस तुहाडा 675 आ रहा है नैस्डैक दा। ये साज नहीं कर सकते, बिग बॉयज चला रहे हैं आज मार्केट। हमारे ईएस तो बेचारी जो है ना साथ साथ कह रही है अच्छा ये 3 कहाँ जा रहे हैं, ईएस में आज मैं बोल नहीं सकता। ईएस है एक्सपेक्टेड हाई से सेल कर दें आज भी, अगर 500 को थल्ले ना जाए तो बाय ना, बाय तो बहुत थले सर, बाय तो सपोर्ट 490 तक 400। हुण इस कैंडल का 50% सपोर्ट बनेगी। हुण ए देखो ए कैंडल है 570, उस तो बाद थले गई है 419 तक, ठीक है। ए कैंडल 151 दी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 $75। हुण 419 ते ऐड करिए 75 प्लस 75, 400 देखो उत्ते वाली रेंज बन गई है, राइट। ते वो 590 बड़ा क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है सर।
लेकिन 30-20 ESH डाइवर्जेंस आ गई है, तो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट प्लीज। अब ये 5 इसकी कैंडल की हाफ है, इस करंट कैंडल की हाफ बनेगी 570 माइनस 419 151 डिवाइडेड बाई 2 75। तो सबसे हाई से 570 माइनस 75। हाँ जी सर, 490 495 तो लॉन्ग बनता है, अगर बनता है तो 60 मिनट की कैंडल का मिड बनेगा S2। सारा मैथ दे नाल हो रहा है, कोई रैंडम असी गैस नहीं कर रहे। नहीं, बेसिक अर्थमेटिक है, यानी कि एडिंग, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट वी वेट फॉर एरियाज टू गेट पेड। और जो कंप्यूटर ने ऑटो प्लॉट कर देता है कि अगर तुसी बाय करोगे तो 490 गुड बाय बनता है, 510 गुड बाय बनता है नैस्डैक। अगर सेल करना है तो हुन 600 ऑफ कोर्स R1 इन्नी दूरों आ रही है तो R1 फिर भी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन उस तो पहले 675 जड़ी है ना, वो कैंडल देखो ब्रेक होंदी है, इधर ते डाइवर्जन फुल बन गई है, 30-20 दे विच पूरी डाइवर्जेंस बन गई है। नहीं थले आने दी, क्योंकि देखो उत्ते डबल टॉप बन गया, इत्थे स्ट्रेंथ बिल्कुल उत्ते नहीं गई, बीबीज भी नहीं गए, यह काम होया भी 3 मिनट दे विच है। नहीं डाउन डाउन, क्योंकि स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही, प्राइस ऊपर गई है, स्ट्रेंथ ऊपर नहीं। नहीं क्योंकि 30-20 में डाइवर्जेंस है। वो बड़ा तेज होता है। हाँ अगर, लेकिन फिर आपको अच्छी मिलनी चाहिए और सीधा इसको तबाही से S2 की तरफ जाना चाहिए। अब ये थ्योरी ये कहती है, नहीं वो देखिए, वो पता कहाँ आएगी, 73 के वैसे नीचे आनी है। देखिए 6082 चल रहा है ना, 6082 माइनस 9 कर दें, मैं ज्यादा के बाद दूंगा, ब्लैक कैंडल के फौरन बाद नहीं, 2 टिक और नीचे, तो 9.5 कर दें, ठीक है। तो 6082 माइनस 9.5, ये देखें 72 पे चलेगी एरिया के बाद। अगर एरिया को पेनेट्रेट कर गए ना, तो फिर मैं इसको स्टॉप सेल ऑर्डर करूंगा फ्यूचर का। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ट्रेड लेना है। हाँ नहीं मैं हाँ देखें, एक ऑर्डर होता है कि मैंने सेल करना है जब आप प्राइस नीचे होती है और मैं कहता हूं मैं सस्ती महंगी प्राइस पे सेल करूं। अब मैं और विक्रम जी डिस्कस कर रहे हैं कि 30-20 में क्योंकि डाइवर्जेंस है, मैं यहां से सेल नहीं करना चाहता, मैं सेल करना चाहता हूं जब ये एरिया को तोड़ जाए, S2 को तोड़ जाए, S1 को। तो वो प्राइस हमने एक निकाली है 72 को, कि 72 पे आए ना तो वहां से सेलिंग हमारी शुरू हो। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल, प्राइस तो अभी बहुत ऊपर है, तो आप फ्यूचर में सेल करेंगे, बेरिश हो जाएगा और डाइवर्जेंस की लाइन लग जाएगी, तो मैं उस डाइवर्जेंस के साथ साथ चलता हूँगा। ट्रू जो है ना, ट्रू ट्रेडर वेट करेगा 6074 माइनस 5 6069 पे, वहां से सेल बनता है इस डाइवर्जेंस ट्रेड को लेने के लिए। तो ये एक बहुत एडवांस लाइक 9th मेथड है कि आपको डाइवर्जेंस 30-20 में आए तो किस पॉइंट से आपने एंटर करना है सेलिंग में। ये डाइवर्जेंस टू द डाउन साइड है, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं सेल करूंगा फ्यूचर में। तो इस ऑर्डर को कहते हैं स्टॉप सेल स्टॉप लिमिट, कि मैं बाय स्टॉप लिमिट तो होता है, लेकिन मैं करना चाहता हूं फ्यूचर में कि जब प्राइस 6069 पे आए ना,
वहां से मेरा सेल का ऑर्डर लो, बाय का ऑर्डर ना लो, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है मुझे साथ ले जाओ, राइट। लेकिन वो कहाँ मैथ आपका कैलकुलेट हो रहा है, 6 ऑर्डर नहीं लगेगा, और डाइवर्जेंस, सब लोग डाइवर्जेंस का ही वेट करते रहते हैं कि किस पॉइंट से हमने बाय एंड सेल लेना है। नैस्डैक में लो, छोटे में लो, बड़े में लो, उससे बड़े में लो। तो अभी तो डाइवर्जेंस है क्योंकि 6080 ऊपर है ना। आपको बता दें कि डाइवर्जेंस कैसे नजर आ रही है, अपने सारे चार्ट देखिए। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, प्राइस, पिछली प्राइस का पीक देखें, पिछला पीक क्या है 6081। चलिए नीचे स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ तो नहीं गई ना, स्ट्रेंथ की लाइन देखें 30, स्ट्रेंथ तो बहुत नीचे बैठी हुई है। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहां से मैं ऊपर नहीं जा रहा। तो लोग कहते हैं ठीक है, हम क्या करते हैं, एक 6082 से 9.5 पॉइंट निकाल देंगे, क्योंकि वहां से ब्लैक कैंडल का ट्रेंड शुरू होता है। या मैथ क्या है, मिड बैंड क्या खड़ा है जी, 6075 पे खड़ा है। 6075 से 5 पॉइंट निकाल देंगे। वो कहां से अपनी सेलिंग शुरू करेंगे, 6070 से। कि अगर वहां से चलती गाड़ी में आपको, और नीचे की डाइवर्जन बड़ी पावरफुल होती है, एक दफा मोमेंटम पकड़ लेना, वो धड़ 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 आपके स्टॉप, या आपको एकदम ही $300 दे जाएगी। नहीं, लेकिन मेरी वीडियो देख के आप ट्रेलिंग सीखें, क्योंकि आज इन्होंने मेरा ख्याल 15 पॉइंट ट्रेल किया है, 20 पॉइंट ट्रेल किया यार, दैट इज इनक्रेडिबल। एक ही ट्रेड, ट्रेलिंग में पावर है ना। और उस है यस में 20 पॉइंट देखें, 20 टाइम्स $50,000 का ट्रेड एक है। एक ऑन मिड बैंड की पेज थी या उसकी एरिया की पेज थी? मिड बैंड और भाई ये ट्रेल करते हैं, या ऑटो ट्रेल कर लो या एटीएम लगा दो। तो लेकिन आपको याद रहे 112 का रिस्क रहेगा। आपने हुआ अगेन, नया ट्रेडर कहता है यार 112 हो गया है, मैंने कभी इतनी जल्दी पैसे नहीं देखे थे, बंद करो जी। तो होता है ना, एक्साइटमेंट हो जाती है, 112 आ गए जी, बंद करो। हाँ जाने दें, जाने दें। मैं इधर नैस्डैक को देख रहा हूँ, 590 का नंबर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ 30-20 के मिड बैंड से 5 पॉइंट पे कलर चेंज होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं कलर चेंज, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या कह रही है कि मैं ट्रेंड चेंज कर दूंगा। तो ट्रेंड कहां से चेंज होता है, 30-20 के 20 टिक्स के बाद, हाँ के बाद। अभी अगर वापस स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गई तो फिर वो ऑर्डर फेल हो जाएगा, मीनिंग कि पिक नहीं हुआ लेकिन मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ उसके अंदर। कल मैं आके ना इधर पक्का ही हॉटस्पॉट कर देंगे, ताकि इधर आपको ना सिखा सकें बिगिनर से। ये देखें ईएस में डाइवर्जेंस, मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर बता देता हूँ। इधर क्या जी, एक चले बंद कर देते हैं, हाँ ये ठीक है। तो आपकी आंखें ना डाइवर्जेंस जिस दिन पकड़ गई ना, आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये मिड बैंड लेना है कि नहीं। ये नंबर पढ़ के बताएं, 81, ठीक है। अगली हाइट का नंबर क्या है, कौन सा बड़ा है, ठीक है, ये ऊपर है, ये इधर है, ठीक है। यहां देखिए, अगर ये 81 है तो ये 82 क्यों है, ये भी तो उसी के साथ चलता है ना, स्ट्रेंथ साथ साथ चलती है। अगर ये वाली स्ट्रेंथ 81 की स्ट्रेंथ ये है, यही है ना उसका पीक, यही डायरेक्ट सीधी चलती है ना। ये 81 है, ये 81 है, सारी इकट्ठी चल रही है ना। अगर ये 83 हो गई है तो ये 83 क्यों नहीं हुई, 83 को तो ऊपर होना चाहिए। तो हमें यहां से विजुअली देख के पता लग रहा है कि प्राइस और स्ट्रेंथ में कोई मसला है, इख्तलाफ है, डाइवर्जेंस है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये 30-20 की, अब ये साथ साथ अगर ये ऊपर आ गई ना, ऊपर 80% तक आ गई, फिर ये डाइवर्जेंस नहीं है। उसके लेवल पे आ गई तो खत्म हो, कन्वर्जेंस हो गई ना, सारा कुछ मैच कर गया। अब इसको होना होता है जल्दी टाइम फ्रेम में, 5 से 8 दिन 10 मिनट के अंदर। 30-20 लगा हुआ है ईएस का,
नहीं नहीं, आप जाके उसको बिल्कुल लाइव प्ले करें, बिल्कुल आगे। जब आपने टर्न ऑन किया ये तो आया नहीं कि आपका डेटा डिलेड है, क्योंकि इस वक्त ये करंट प्राइस चल रही है, ये देखें ये 8485 प्राइस चल रही है? अच्छा, अब क्या होगा, कुछ जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो क्या करेंगे, ये एक मिड बैंड की प्राइस चल रही है। अब देखिए, वैसे बाय द वे डाइवर्जेंस खत्म हो रही है, 77 से माइनस करेंगे 5 पॉइंट, ठीक है, एक मैथ है, अभी 79 चल रही है, वहां से करेंगे 5 पॉइंट माइनस और वहां सेल में बैठ जाएंगे कि अगर जब ट्रेंड चेंज होता 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 नीचे आए और यहां लग जाएगी व्हाइट की लाइन, वो उसको तेजी से नीचे ले आएगी, तो बॉटम की डाइवर्जेंस ज्यादा तेज होती है। और अगेन सेम, कुछ लोग 15-10 में ये एडवांटेज लेते हैं, जैसे ही मिड बैंड से 3 पॉइंट पे नीचे आई उन्होंने डाइवर्जेंस ली, लेकिन 30-20 की डाइवर्जेंस ज्यादा पावरफुल है। नहीं नहीं, देखें अगेन बात यह है कि वो क्या कर रहे हैं, वो सेल में कहां से बैठे हैं, इस नंबर से, वो उस वक्त जब वो सेल पिक होगा ना, वो रेड होगा। जब प्राइस 6079 -5 होगी ना, जब प्राइस -5 क्या 8 7 6 बैरिश हो जाएगा। तो एक मैथ है ना कि किस पॉइंट पे वो बैरिश होता है, इसका भी एक पॉइंट है किस पॉइंट पे बैरिश होता है, मैथमेटिक्स चल रही है। तो लो एडवांस ट्रेडर है, जैसे ही डाइवर्जेंस देखेगा वो कहेगा यार मैं मिड बैंड तो ले नहीं रहा, चलो नीचे जाते हुए सेल में लगा देते हैं, वहां से भी चीजें खराब हो सकती है। ऐसे नहीं है कि हमने डाइवर्जेंस देखी, सिर्फ मिड बैंड तक आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली, तो आप मिड बैंड पे नहीं एंटर होते, डाइवर्जेंस पे, ट्रेंड चेंज पे होते हैं कि मैं सेल करूंगा तो ट्रेंड के साथ हो रही है तो खत्म है ये नहीं, वो तकरीबन आज तक अब 80% हो गई है, तो ऑलमोस्ट अब ये 87 के बाद ये इसका अब नो लॉन्गर डाइवर्ज, क्योंकि ये व्हाइट लाइन प्लॉट नहीं करेगा। हाँ सही जा रही है ना, अब हमारा मिड बैंड स्ट्रांग है कि सारी चीजें ठीक है, अब हमने ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन एक्सपेक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब मेरे पास डाइवर्जेंस नहीं है तो लो ऑफ द बार फेवरेबल है, या इधर का मिड बैंड, इधर का मिड बैंड लेना 15-10 का मिड बैंड क्या बनता है 6080। आपने ये नहीं लेना, देखिए अब आपके पास 3 ट्रेड की ऑप्शन है, या तो आप अपना ट्रेड लगाएं 84 पे बाय का, या अपना ट्रेड लगाएं 80 पे बाय का, या अपना ट्रेड लगाएं 79 बाय का, सिर्फ बाय चल रही है। ये तीन ट्रेड आ गए, लो ऑफ द बार, मिड बैंड 30-20, आप पे रिस्क पे डिपेंड करता है। हाँ जी, नहीं इकट्ठा ही का क्या मतलब, नहीं तीनों ही हो गए, 3 लॉट हो गए ना, नहीं। अच्छा बात यह है कि अगर आपने एक ऑर्डर, मैं अभी आपके सामने ऑर्डर लगाता हूँ अभी लाइव दिखा के, नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक ऑर्डर लगाता हूँ, ये इसको सिम किया, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अभी इसको मैं जूम इन भी नीचे से कर देता हूँ, ये देखें। अब मेरा एक ऑर्डर कंप्यूटर कहता है यार अगर तुमने खरीदना ही है ना तो यहां से बाय करो 88 से, बॉटम ऑफ द बार है ना। एक कंप्यूटर कहता है कि यार अगर तुमने लेना है ना तो यहां से भी खरीद सकते हो, ठीक है, बाय कर सकते। अगला तीसरा ऑर्डर 30-20 का मिड बैंड है। अब आपको डैनियल ने कई दफा कहा है कि ये गार्ड रेल के पास पहुंच गई है, यहां बॉटम ऑफ द बार रिस्की हो जाते हैं, क्यों 94% ओवरबॉट है, तो यहां ना लें बॉटम ऑफ द बार, यहां पर आप ले लें मिड बैंड ले लें। तो इस ऑर्डर को ये, अच्छा मजे की बात है, ये भी पास हो सकता है अगर हम यहां रिस्क लें 88 पे, रिस्क की बात करते हैं कि 88 पे मैंने बाय का ऑर्डर लगाया, तो देखिए मेरा ऑर्डर हो गया पिक, ठीक है, लेट्स सी यहां से मुझे 1 पॉइंट देता है कि नहीं, बॉटम ऑफ द बार से एक, ये बॉटम ऑफ द बार ऑर्डर था, ये मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, 1 टिक आ गया, 2 टिक्स आ गए, 1 पॉइंट आ गया, डन, मैं ट्रेड से बाहर हूं जी, $50 देखिए 1 पॉइंट लिया, इवन दो इतनी ओवरबॉट थी, मुझे इसने 1 पॉइंट दिया और मैंने बाहर आ गया। तो
सर स्टॉप लॉस आप ये देखें 62 है, अच्छा 2 पॉइंट दे गया, मैंने अभी तक बंद नहीं किया। जनरली $100 का स्टॉप लॉस होता है। आपने अगर बॉटम ऑफ द बार लेना है तो फिर 1 पॉइंट रखें या 2 रखें। अभी भी मैंने बॉटम ऑफ द बार लिया है तो यार देखें यार 1-2 पॉइंट मिल गए। ये नहीं है कि मैं जहां से लगा रहा हूं वहां से प्रॉफिट हो रहा है। मैथ क्या कह रहा है, मैथ कह रहा है कि मैं ऊपर गया, ये देखिए 2 पॉइंट है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ग्रीन रखा है अपने आप को, मीनिंग के बाय में रहा हूं, मैंने सेल नहीं किया। इवन दो यार इतना प्यारा ट्रेड लगा है, मुझे यहां पर एक डाउट था यार ओवर बॉट है, मुझे मिड बैंड सेफ रहेगा। जिसने जहां से रिस्क लिया वो ले गया जी आपको। अब मैं क्या करूंगा, मेरा काम है कि इसको ट्रेल करना, मैं यहां लगाऊंगा बाय स्टॉप और वो चली गई सर, एक ही अच्छा ट्रेड, इसको मिडल ऑफ द पे लॉक कर दिया भाई, इतने पैसे तो लॉक हो गया जी। इतनी सी बात, like I know I make it look so easy, it's that easy। तो आपको सिर्फ एंट्री ठीक करनी है। कंप्यूटर ग्रीन में 3 एंट्रियां देगा, मिड बैंड 30-20, मिड बैंड 15-10 या बॉटम ऑफ द बार। तो अगर आपने 88 पे लगाया है, आपके सामने मैंने $150 लिए हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पता है कि यार -100 हुए वहां बंद कर देंगे, दैट्स इट। होता ही है कि -100 कोई नहीं लेना चाहता, ये नेचुरल है, बट इट्स ओके। फिर आप ट्रेडिंग ना करें, दैट्स वेयर, क्योंकि ट्रेड में, हर ट्रेड में इनहेरेंट रिस्क होता है। आपको अपने रिस्क का पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां से लूंगा तो कितना स्टॉप लॉस लूंगा, अगर मैं मिड बैंड से लूंगा तो कितना स्टॉप लॉस लूंगा। होता ये है कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता और कहते हैं ठीक है यार, फिर होता ही है 1-2-3 दफा तो प्राइस आ जाती है और फिर 9वें दिन आपको स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं होती ना, तो वो 1500 माइनस करके फिर आप 10वें दिन डे 1 पे कहते हैं लाओ जी $50 का टोकन फिर डालें, फिर वीडियो गेम स्टार्ट हो जाए। मैं 28 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, 28 दिन से इस साल में, आज 29वां दिन है, एक भी दिन हमारी एरियाज फेल नहीं हुए। नंबर 1 जिन लोगों ने एरिया किया, और साथ साथ यार ये ठीक है स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होते, मिड बैंड भी स्टॉप लॉस हिट होता है, 30-20 भी होता है, लेकिन आपने अगर 10 ट्रेड किए हैं तो 7 तो सही जाए यार, 7 तो उसके। लेकिन यहां पर लोग सेल डाल देंगे, पता क्यों, यार इतनी ओवरबॉट हो गई है, यहां से नीचे आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं एरिया का है। एक सेकेंड, एरिया एक्सपेक्टेड, सर जी एरिया 6100 है, तो अब क्योंकि इतनी नीचे से आ रही है तो 6100 नैस्डैक किधर चली गई, 622 पे, तो नैस्डैक का वेट कर रहा हूं मैं 675 का। अच्छा नो प्रॉब्लम, इसकी वैसे वीडियो बनेगी ऑफिशियल। नहीं मैं सिर्फ कह रहा अगर मैं सेल करना है ना तो मैं R1 तो करूंगा, क्योंकि उतों रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कंप्यूटर ने एक नंबर देता है कि क्योंकि आपने ग्रीन में बाय करते जाना है जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ना आए। तो अभी इसमें भी 7 पॉइंट का गैप है, अब मैं यहां से सेल नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। आई डोंट केयर कि मुझे फीलिंग है कि गार्ड ड्रिल के साथ टच हो गई है, कंप्यूटर ने मुझे कहा है भाई बाय करना है तो बॉटम ऑफ द बार अपना ऑर्डर लगा दो, यहां पर रिस्क ठीक है, ये ले जी बॉटम ऑफ द बार फिर लगा दिया, या फिर 85 पे लगाओ, आपको मिड बैंड है 85 से भी नीचे आ सकती है, 30-20 के मिड बैंड से भी आ सकती है। लेकिन एक अच्छा ट्रेड बॉटम ऑफ द बार कितना प्यारा चलें जी, ये बॉटम ऑफ द बार फिर लग गया। अब यहां देखते हैं कि इस बॉटम ऑफ द बार से क्या होता है। -100 देखूंगा मैं, बाहर जा रहा हूं, नहीं क्या पता, हमें नहीं पता, हमें देखें स्ट्रेंथ जितनी मर्जी चढ़ जाए 100 से भी चलती रहती है। मुझे ये पता है कि इस ट्रेड में मैंने $50 लेने हैं, कम टिक्स ले लूंगा ना क्योंकि बहुत ओवरबॉट है, लेकिन रहूंगा मैं बाय में, क्योंकि अगर यहां से शूट, अब यहां 100 है, मैं निकल रहा हूं इस ट्रेड से, भाई नहीं निकल रहा, मेरा 100 पूरा हो गया क्योंकि बहुत ओवरबॉट थी। अगला ऑर्डर ये है जी 86 से, ठीक है, मैंने ये छोटा सा लॉस ले लिया, अब मैं बाय लिमिट ले लूं कि अपना लॉस रखना है ना। अब कंप्यूटर ने कहा यार लेना है तो 78 से लो, ये 78 की प्राइस अच्छी है,
अभी भी लार्ज ट्रिगर्स वाइड ओपन है 30-20 में, स्ट्रेंथ इसमें अभी भी 10 पॉइंट की है, तो ये 7 पॉइंट R1 तक जा सकता है। तो अभी यहां मैं मिड बैंड पे बैठ गया हूं, ठीक है, मैंने अपना वो लॉस लिया बॉटम ऑफ द बार से क्योंकि बहुत ओवरबॉट थी, अब लेकिन रिट्रेस ले रही है। कंप्यूटर ने कहा भाई खरीदना है तो 78 से लो, ये अच्छी प्राइस है। तो आपको बेस्ट प्राइस कंप्यूटर निकाल के लाइव दे रहा है कि भाई अगर लेना है तो इस प्राइस से लो। उससे अच्छी प्राइस 84 है, एक प्राइस 78 है, उससे अगली प्राइस आपकी ये देखिए मेरा ऑर्डर पिक हो गया, देखें 1-12, एक टिक दिया, 2 टिक दिया, 1 पॉइंट ले लिया मैंने, ले लिया सर, 1 पॉइंट मैंने लेके बाहर आया हूं, डन कर दिया। सिंपल इतने सा मैथ है और कुछ नहीं। अभी भी मैं अब ट्रेड में बैठा हूं, मुझे अपना लॉस का पता है कि भाई 8.5 पॉइंट तक मैं बैठ सकता हूं लॉस के अंदर इस नंबर से, या 9 तक बैठ सकता हूं, उसके बाद मैं निकल रहा हूं। लेकिन इस मिड बैंड ने भी मुझे 1 पॉइंट दिया है और अभी तक मैं स्टॉप लॉस हिट। अगला मिड बैंड का ट्रेड ये है, ये जो साथ साथ प्राइस जा रही है अप्रोक्सीमेटली 84.50, लेकिन उधर से लिया, लेकिन मैं 9 से आगे नहीं बैठूंगा इस ट्रेड से, क्योंकि 9 से गुजर गई तो यहां पर ब्लैक कैंडल बन जाएगी। अभी भी मैं स्ट्रेट से स्टॉप लॉस नहीं हुआ, देखिए अभी भी मैं ग्रीन में ही हूं, 37 बन गए, नो प्रॉब्लम। 1 पॉइंट मैं देख चुका हूं वैसे आप लोगों के सामने। अरे आपको थोड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होनी, ठीक है यार मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, मुझे अपने स्टॉप लॉस का पता है, 1 पॉइंट और है तो मैं यहां से लॉस ले रहा हूं, क्योंकि 30-20 में गैप ट्रेड बना हुआ है इस वक्त, 30-20 का मिड बैंड टेस्ट हो गया है अभी, समवट वेरी क्लोज, एक आध टिक रह गया। तो अभी तक मुझे 15-10 तंग नहीं कर रहा, 9 पॉइंट पे करेगा, यस नो प्रॉब्लम। अपना स्टॉप लॉस 8.5, 8.75, 9 तक रखे, निकल जाए। ठीक है जी, मैंने अभी कुछ नहीं, अपना ना पैनिक हो रहा हूं ना कुछ है, अपना ट्रेड 1 पॉइंट लगा हुआ है, ले हो जाए 2 पॉइंट हो गए। ये देखिए मैंने अब क्या करना है, यहां से अपना स्टॉप लॉस लेना है और 0 पे कर देना है। ये लें जी, 0 पे आ गया, मेरे ट्रेड में से मैंने $25 लॉक कर लिए। देखा $112, $100 देखा, लेकिन लॉक सिर्फ 25 की है, क्योंकि अगर यहां से ये ऊपर शूट कर जाती है, लार्ज ट्रिगर्स थोड़े से जंटा हो रहे हैं तो मुझे शायद ज्यादा पॉइंट ना मिले, क्योंकि ये देखें लार्ज ट्रिगर्स ट्विस्ट होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी इस ट्रेड में से, मिड बैंड के ट्रेड से, मुझे वहां मैंने लिया था ना 100 का लॉस, यहां मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है। तो ये नहीं है -100, -200, -300, -400 और अब कहो यार मेरा तो लॉस हो गया। आपने अपना रखना, ये मैंने $50 लिए, 100 उधर नुकसान किया था, 50 इधर से लेके आधा रिकवर कर लिया। तो हर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होना जरूरी है, ख्वाह मिड बैंड हो ख्वाह 80, क्योंकि फिर आप ऑनेस्टली बैठे रहेंगे ना विदाउट स्टॉप लॉस, तो ऐसे होता है। अच्छा इमेजिन करें यहां मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया होता, नहीं लिया ना फॉर एग्जांपल, तो पहले तो ये 400 का ट्रेड बन गया ना माइनस, ठीक है। अब आपकी हार्ट बीट भी तेज हो रही है, आपने वो पुराना गम बुलाया, आप इस पे बैठ गए, यहां से रिकवर कर लिया। अब अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लिया हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई, अगली भी मिस हो गई, राइट। तो एक बुरे से ट्रेड्स में अगर हो गया है, पहले तो ट्रेड को देख के लेना है कि यार मैंने, कंप्यूटर ने कहा बाय करो, मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस लो ऑफ द बार पहला वाला लिया, वो बहुत ओवरबॉट हो गई थी, टेक्निकली रियली बनता नहीं था, लेकिन मिड बैंड आपका अभी भी 2 पॉइंट दे गया यार। सर यहां पर लार्ज ट्रिगर्स जो है ना वो स्टार्ट टू पिंच हो रहे हैं, लेट्स सी इफ दिस गोज, क्योंकि यहां जब पिंच होने शुरू हो जाए ना, फिर ये समवट सेफ हो जाता है मिड बैंड, समवट, क्योंकि ये इसकी कोरिलेशन है कि मैं जो है ना थोड़ा ज्यादा नीचे जाऊंगा। तो लार्ज, सो ऑल 8-9 चीजों को आप देखते रहें। Yes, we have a full video on chart trader with auto trail and everything else. अब अगली कैंडल खुली है जो 54 मिनट बाद बंद होगी और इसने इसको रिवर्सल लिया है 609 से। अभी ये आई थी 50%, इसके
Mid-band 60-minute. It still has more chances to go up to R1. I still think it will go towards R1. ये Nasdaq mid-band को टच करके वापस चलेगी. नहीं अभी नहीं, अभी तो उसका आपका Nasdaq का सिर्फ देख रहा हूँ कि Nasdaq किस साइड पे जा रही है. एक दफा फर्स्ट अटेम्प्ट. अभी 30-20 का मिड बैंड टेस्ट हो रहा है. अब Nasdaq यहां से बाउंस ले ले बाय की, ये देखते हैं 560 यहाँ बाय, लेकिन एक्चुअली इसकी हाफ कैंडल पे बाय बनेगा 60 मिनट की. तो 625 तक हाई गया है, 419 तक लो गया है, डिवाइडेड बाय 2 103. तो 625 माइनस 103 522 तक बनता है इसका. लेट्स सी. अभी यहाँ पे अगर सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करनी है? राइट नाउ वेरी लो एरिया है, लोएस्ट पॉइंट 6082.53 और तो 8 माइनस स्टॉप लॉस थी. यस, सेल का जैसे सेल में बैठ जाते पहले. नहीं यहाँ से तो सेल नहीं होगा. आप जहां से भी पहले देंगे किस प्राइस से आप एंटर करना चाहते हैं सेल में. नहीं देखिए, सेल में एडवांस में सिर्फ डाइवर्जेंस पे होता है, और आप जनरली तो नहीं करते. 15 30 20 का मिड बैंड भी आपको दे गया, 3 पॉइंट दे गया 85 से ऑल द वे. अब ये डाइवर्जेंस जाके लगा सकती है 6100 पे, क्योंकि उसने बाय लिया Nasdaq ने 570 से, वो बाय की तरफ चली गई और वापस ऊपर जा रही है. तो पहले हमने लो ऑफ द बार एक बाय, दूसरा बाय मिड बैंड, तीसरा बाय 30-20 का मिड बैंड, एंड ऑफ द स्टोरी. अब सेल करेंगे R1 पे, लेकिन लॉस लेना है छोटा सा. अगर लो ऑफ द बार, टॉप ऑफ द बार, कुछ भी आपको अभी टिक बिहेवियर ऊपर की तरफ है 30-20 का. लेजेंड्स बंद कर दें, बुल लॉक्स भी तकरीबन हो ही गया. बुल लॉक्स All right, thank you, Jay, for passing the Wordia. You did this in 11 days, and perfect. Congratulations. 3 live accounts, 8 prop firms, steady payout. Excellent. Congratulations, Jay. I'm going to post this on the status. Excellent. Another milestone done.
Excellent, Jay. Very good. Very good. वैसे मेजॉरिटी ट्रेडिंग तो हो चुकी है, सिर्फ फन के तौर पे बैठे हैं। नास्डैक की बस फाइट हो रही है, किधर जाना है, S1 से ऊपर जाना है या S1 से नीचे जाना है। एनवीडिया का बाय पॉइंट क्या होगा? लेट मी सी एनवीडिया का बाय पॉइंट, लेट मी फिगर इट आउट, लेट मी गिव you एनवीडिया. Somebody asked me, let me open up a chart on 240 Nasdaq NVIDIA. NVIDIA. Let me connect in my paid subscription. You know, because we don't do stocks, we do futures trading mostly. So NVIDIA, because of the earnings, I'll double check. What a beautiful. अब देखें ना, लोग क्या करेंगे, मिड बैंड के नीचे 5 पॉइंट बैठे होंगे, वहां से सेल शुरू कर देंगे। जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ 84 - 5 79 पे सेल कर दिया, 1-2 पॉइंट लिए, नीचे आ गए, तो फ्यूचर में सेलिंग हुई है, वापस वैल्यू एरिया के अंदर आ रही है। Let me do it with Connect because I have a stocks membership as well. Kind. लेजेंड में डेली लॉस लिमिट भी है? नहीं, पूरा अकाउंट तबाह कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम $100। उन्होंने कहा 2 पॉइंट से आगे ना जाए सर। 5 पॉइंट 30-20 ਦਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ 9 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 18 ਹੈ, ਹਾਇਰ ਹਾਈ -18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਡ ਬੈਂਡ 3 ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। एग्जैक्टली वी टिक मीनिंग $200
50 अरबे 4 दो 30-20 ਦੇ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ $200 ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੋਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 30-20 ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, 15-10 ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ 30-20 ਦਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ, 30-20 ਦਾ ਲੋ ਅਪ ਦਾ ਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਟॉप ऑफ द बार चले जाओ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦੀ कि ऐसी, लेकिन 30-20 बहुत स्लो चलता है। ये तो आज चल रहा है नैस्डैक की वजह से, वरना पिछले दिनों में देखा है ट्रेड ही नहीं आती। आप बैठे रहोगे पूरा 1 बजे तक बैठे हो, एक लो ऑफ द बार आया है तो फिर हम 15-10 में चले जाते हैं। तो तेज दिनों में 20-20 में 30-20 भी आ जाए। अब कल भी तेज होगा क्योंकि एप्पल का है और फ्राइडे को भी तेज है आपका, सॉरी आपका अगली जो अर्निंग्स कम है आज, तो आज है ना एप्पल की और की कल है, तो कल ये फिर मंडे को आप 15-10 में आ जाए। वो जिस दिन हैवी ड्यूटी ये 8 न्यूज हो तो आप 30-20 चले जाए। एरिया जो है किसके पास क्लियर होता है? सुबह 9 बजे 8:30 से 9 मैक्सिमम 9:15 तक कंप्यूटर सारे अपडेट कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई जो हैं वो करते हैं 9:38 जब तक ट्रेड अभी ओपन हो रही होती है। नहीं वो ब्रीफ देते हैं ना, ब्रीफ देखें मार्केट 23 घंटे खुली है, उन्होंने 9:30 से पहले ब्रीफ देनी है आपको, तो वो नहीं मेजोरिटी लोग स्टॉक मार्केट के साथ चल रहे हैं ना, तो स्टॉक मार्केट 9:30 पे खुलती है तो वो 9:25 पे अपनी 2-3 मिनट की ब्रीफ दे देते हैं कि आज सिर्फ मैंने उस ब्रीफ में इससे क्या सुनना होता है, आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। मेरा आज का प्लान था हाई टू गो लो, तो इसका मतलब है जब जब प्राइस ऊपर गई मैं सेल में रहूंगा। हाँ एक दफा आपको उनकी ब्रीफ पता लग गई ना कि कौन सा एरिया स्ट्रांग रहेगा और कौन से हम सर फिर मैं हमेशा कहता हूँ आपके घरों में आके सिर्फ वैक्यूम करना रह गया, तकरीबन हमने सारा काम कर दिया आपके लिए। और जो मिड बैंड की एटीएम तैयार हो रही है, अगेन हम उसको रीशफल करते रहते हैं तो वो फुली ऑटोमेटेड हो जाएगी, क्योंकि हमने अब उसको लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देखी है। क्योंकि पहला जो हमारे पास मिड बैंड की एटीएम है ना, वो हर मिड बैंड ले जा रही है, ग्रीन में भी रेड में भी, ग्रीन में भी रेड में, दोनों मिड बैंड। अब हमने ये देखना है प्राइस मस्ट बी रिटर्निंग फ्रॉम हायर हाई, लार्ज ट्रिगर्स मस्ट बी ग्रीन, ओवरबॉट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये 3 हो गए। उसके बाद दोनों चार्ट सही हो, डाइवर्जन ना हो, ये 4 या 5 चीजें या 6 चीजें सही होंगी तो वो खुद ही मिड बैंड पे आपका ऑर्डर लगा देगा। ठीक है, तो अपने स्टॉप लॉस आप डिफाइन करोगे सुपर एरियाज पे जाके और अपना टीपी डिफाइन करोगे, तो ये आपको सुपर एरियाज की मेंबरशिप के साथ मुफ्त मिल जाएगा। तो आपको मिड बैंड का ऑर्डर भी खुद लग जाएगा, ये आपको नहीं पता होगा कि लाइक खुद ही आप सिर्फ उसको इनेबल करेंगे, वो ऑर्डर भी खुद लगा देगा, टीपी भी खुद लगाएगा, एसएल भी खुद लगाएगा, ट्रेल भी खुद करेगा। आपने सिर्फ देखना है कि ठीक है जी, तो कंप्यूटर तो 5-6 चीजें खुद चेक कर लेगा, मेरा लार्ज ट्रिगर क्या है, मेरा हायर हाई से आ रहा है, मेरा दोनों ट्रेंड क्या है, मेरी डाइवर्जन है तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको ऑन एंड ऑफ करना है अगर एरिया से आ रही है, क्योंकि उसको एरिया के नंबर्स एवरी डे चेंज हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट। अभी देखिए मिड बैंड पास हो गया जी, आपका बड़ा प्यारा मिड बैंड पास हुआ है जी, इससे ज्यादा और क्या बंदा आपको 2-2 पॉइंट कैसे दे। नीचे आ रही थी, कंप्यूटर ने आपसे कहा कि 6080 पे सेल कर दो, आपने सेल किया और निकल गए, 2 पॉइंट खत्म हुए, वो लॉस तो कवर हो गया ना जो ऊपर लिया हुआ था। लॉस जो नहीं रिकवर होता है -400, 500, 600, अब आप लॉस भी ले जा रहे हैं और ये ट्रेड भी मिस करी जा रहे हैं। उस वक्त छोटी सी पेन बुलाएं यार, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगले ट्रेड में बैठ जाएं, नो प्रॉब्लम, कोई बात, आगे फिर हिम्मत नहीं आती, कोई बात नहीं, फिर आपका दिन का ट्रेड खत्म हो गया ना, ये ठीक है। बड़ा प्यारा लार्ज फिगर्स डाउन थे, टॉप ऑफ द बार 30-20 का आपने लिया और वो नैस्डैक इस साइड पे तोड़ती चली आ गई। मैं आपको इनवीडिया दिखा देता हूँ सर, थोड़ा सा मैं ट्रेड सीधा कर लूँ, इनवीडिया का यूजर नेम मुझे चाहिए। तो जो
30-20 का वो जो है ना, वो एक फिक्स है बेसिकली उसका, उसको नहीं किया। मिड बैंड नहीं, वो टॉप ऑफ द बार था ये 30-20। ये सेल में 3 सेल है ना, टॉप ऑफ द बार सेल करें, मिड बैंड पे सेल करें, 30-20 पे सेल करें, दैट्स इट। लेकिन 15-10 का मिड बैंड जो है वो चल रहा है। Username, password, connect, login information. मंडे से जब से ओपन हुई है तो ये अपने उसको जहाँ से ओपन हुई है अभी तक उसको ईएस ने नहीं किया। 36 तक नहीं गई तो तकरीबन, क्योंकि 3 अर्निंग्स निकल जान फिर उस तो बाद। All right, somebody asked me NVIDIA. All right, NVIDIA 200 and daily chart. Let's look at daily, 1 day. $116 was a good buy, so below 116 you have a divergence to the upside, so it made a lower low. It should go back up. Anything below 116 is a good buy. So looking at my chart, I am looking at, and you can hold it until 136. 136 is it, and if you want to short it above 170, 160. But right now it's very much bottom of my daily chart, so it's a good buy. So anybody did options on 2-3 days ago, price went back up to 130 and shot down, but anything below 115, 116 is a good buy for NVIDIA. 119, yeah, it's a little high, but my computer is saying 115. 115 reasonable, because if it breaks 116, 115, that's a reasonable buy until 136. So that is what my computer is analyzing. And of course, none of this is financial advice. We don't do stocks. We mostly do day trading with futures. But this is what NVIDIA is saying for me, based on. So it's मेरा टेक प्रॉफिट में अगर 2 पॉइंट लेने हैं बस। जब आप ये इसकी ट्रेड करते हैं बार की, तो जस्ट 1 पॉइंट जनरली अगर 30-20 है तो 2 पॉइंट, और 15-10 में 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल जाता है। Candle is just opened at 6 minutes to go on a 30-minute candle, 15-minute candle, and the price is at S1. Triple divergence to go down. अभी मार्केट वहीं पर फंस गई है। नैस्डैक का रुख देखते हैं।
लो जी एक पॉइंट ले लिया टॉप स्टेप भी खत्म येलो बाल्स आ रहे हैं तेजी से S1 को तोड़ दिया जिस नो प्रॉब्लम नैस्डैक आ गई जी वाह सारा सर्कल लेके आ गई नीचे तो आपके दो मिड बैंड नीचे आते हुए चल गए एक गैप ट्रेड था ऑलमोस्ट नो गैप ट्रेड जरूर Another mid band, but I missed by a tick. Touched S2, came back up Nasdaq. We don't do one monthly. It will be at least 2 ES and Nasdaq, $49.99 per month. But at least 2 months of work is pending for the new website, superareasalgo.com. So 2 markets, $49.99, 10 markets, $149.99. And then if you go 3-month package, 6 months package, different. But 2 markets, $49.99 per month. ES and Nasdaq. And that doesn't include software or anything, no live stream, no nothing, just areas only. From anywhere from 2 ES Nasdaq, crude oil, gold, whichever 2 markets you prefer. But first initial is just 10 markets for 150, and maybe then we'll add the
two market option. Yeah, of course, videos are not included. Nothing is included. Those who are looking for areas, they know everything. They may be looking for TradingView or Ninja, and I'll include one videos on how to use areas. That's it, not the full materials, only area videos. Everything would be on superareasalgo.com, not superareas.com. So that's the third extension we are doing. ये जो मिड 30-20 के मिड ये है जो बीबीज हैं ये -1.76 बाई हाँ, वो साथ साथ चलती है क्योंकि बहुत मूविंग एवरेजेस बहुत नीचे गिर गई है स्ट्रेंथ के साथ। तो अब S2 फिर टेस्ट होने जा रहा है ना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हमारी एक्सपेक्टेड लो पे भी जा सकते हैं। जा सकते, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब हमारे वैलिड एरिया सिर्फ R2 है ऊपर की तरफ और इधर नीचे S3 है। ठीक है, अब आप इसको बंद करें और सेव ना कीजिएगा, नो कीजिएगा, फिर वो दोबारा आ जाता है। अगर सेव हो गया है तो फिर आपको अंदर देखना पड़ेगा उनको। तो अगर आपने बंद करते हुए सेव ना करें बस। मेन जो, हाँ नहीं, आप जाएं YouTube के हमारे चैनल पे और मंडे वाली मेरी ओरिएंटेशन के टाइम पे चले जाए। मंडे को ओरिएंटेशन हुई क्योंकि सारा ने मंडे को नए बैच ने ज्वाइन किया ना। मंडे वाली ओरिएंटेशन अराउंड 11 o'clock, तो वो 2 आवर के सुन लीजिए। वो बताता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड। हाँ वही आपका, मैं इधर होऊंगा टुमारो 9:30। मैं इधर थोड़ा सा लेट आता हूँ फ्राइडे को क्योंकि डैनियल नहीं आते। Large triggers are turning green, so
What's mid band of 30-20? It might work one way, some days, 3 days, 4 days, you have to reserve to. Don't push for it. Because what area you have. Anyone place an order? Why? Other projection concept now. What you do with this in demo will become your habit in your real life. It's someone capture. शुरुआत से ही अपनी अच्छे से करो या आदत पड़ जाए ठीक से करो bad habits develop really fast good habits take time so take your time डालना बहुत आसान है लेकिन वो नेगेटिव दिखता है ना बच्चे नहीं Okay, take care. वो जीरो लाइन से ऊपर चले गए स्ट्रेंथ देखिए और बायर्स ऊपर है सेलर्स नीचे लोग क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे देखना पड़ता है इवन वो 30-20 में आपकी स्ट्रेंथ बहुत टाइट हो गई है तो वो सोल्ड बट इट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन ये चीज़ों को नोटिस करके फिर ऑर्डर डालना मार्केट स्लो हो चुकी है ये बारिश करती है ये बारिश करती है बाहर ऊपर है सेलर नीचे लेकिन ये मैच चलता है तो ऑर्डर के नीचे की डायरेक्शन में डालना ऑर्डर तो जब ये निकल जाए हाँ सेल के कर डालना ना ये नीचे की तरफ आ रहा है ये तो ऊपर जा रहा है हम भी कभी करते हैं अच्छा हमें तो प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो भी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि जब आपको ऐसा ट्रेंड दिखता है ना कि मुझे उसको जाने नहीं आना, ठीक है, कल फ्राइडे को होता है हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ। स्लो है 11 बजे तक। Okay. सर ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ मतलब 15.6 days अगर somebody is on loss for example for 500 ਦੇ loss ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ $600 ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 450 ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ 1000 ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਤੇ 450 ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 450 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 450 ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਡੋ ਆਲਮੋਸਟ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਮਿਲਦੇ ਨੇ 2 ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਦੇਖੋ 1 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 3 ਦੇਖੋ 2 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰ।
ट्रेलिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2020 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 20 ਲਾਸਟ ਤੇ 1.2 हाँ जिथे मर्जी ट्रेल करो लेकिन पीछे आई जो $100 तो ट्रेलिंग सिम दी ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ नहीं फिर टाइम गुजर गया ना देखो फिर टाइम नहीं कल मैं अच्छा ठीक है वो तीनों सक्सेसफुल हाँ लेकिन आज मैं वो ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ कितनी है no. टाइम लगना है चिंता ना करो नहीं से कोई समझाना है ना एक रूल है तो डिवीजन समझ गया मैं तो डिवीजन अंत तक समझा नहीं आज ही समझ आई वैसे ना सेंटर का नाम मैं थोड़ा ये थोड़ा कट करूंगा मैं कोई मॉडल करूंगा मैं नजर करूंगा तो ये से काफी देना में कर देंगे हां ये समझ जो मैं क्या करना पर वो समझ अच्छी है ये वो आनी है अपना उनका फ्रेंड आया Yes, what would you like to know? Everybody's here. We've been here since 2008. कोई न्यूज़ आ रही है कि अरे वो ने ट्रंप ने कोई रिकॉग्नाइज की है क्रिप्टो करेंसी नहीं नहीं मैं वो तो सिर्फ बिटकॉइन दे मुकाबले से रिपल सोलाना और इथेरियम शेयर और ऐसा भी रिपल रू एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो गई सोलर ऐसा पे जाने ऐसा की ना तो लास्ट रूट चल रहा है हां बता ये नीचे तो फिर 40 सेंट आ गया सीधा हाँ नहीं लाइट ऑन कर दें मुझे टाइपिंग कर लो भी पूछ गया कुछ तो 4.5 से 4.5 तो अगर वो उसको ही हो गया कुछ जापान से भी उन्होंने बैंक की चैनल रजिस्टर करता है फिर आखिर खत्म हो गया तो एक्सचेंज काम करेगा इसी जगह काम करेगा तो उम्मीद है कि शोर वाला खत्म हो जाएगा बैंक पर मेरे से क्यों करे सारे रिकॉल का नेटवर्क ट्रांजैक्शन इजी है ਤੁਸੀਂ 1000 को सॉरी वीडियो देखिए वो लगाना 50 साल पहले जैसे हो रहा है आप 50 साल से डाउन डाउन कर लीजिए ऑर्डर लगा लेकिन लॉस में जा रहा है इसका ऑर्डर नहीं सही अभी अब लगाएं मिड बैंड ग्रीन में ऑर्डर लगाएं मिड बैंड है 607 तो वहां जाके लगाया होता नहीं मैंने चार्ट से करा इसमें नहीं चार्ट रेट से डाउन से यहाँ से ना यहाँ से चार्ट से स्टार्ट तो मैं अच्छा यहाँ से कहाँ ये उस वीडियो के अंदर क्लियरली चार्ट कैसा कल आपको माजिद भाई से मार्केट ये समझ में आप हाँ जी सर तो अभी डेमो पे हाँ डेमो अब करो अब यहाँ पर वो आपका सेट क्या पैसे स्पेशल प्राइस 077 कैसे करना है अभी आपको ये यहाँ पर ले जाना है अच्छा ये आगे पॉइंट आ गया मिड ये राइट क्लिक अब ये यहाँ पर बाय आ गया ये बाय पर लेफ्ट क्लिक कर दिया की ऑर्डर ठीक है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस आपका जब ट्रेड लग जाएगा उसके बाद लगाना है फिर वो जहाँ पर ऊपर जाएगी जिस नंबर पर वहाँ से 8.5 पॉइंट नीचे 9 पॉइंट नीचे पॉइंट की टिक्स पॉइंट्स की ना पॉइंट पॉइंट एक पॉइंट में 4 टिक्स है ना तो 8 पॉइंट मतलब तकरीबन जैसे अगर 70 है तो 8 पॉइंट नीचे होकर 62 हो जाएगा नहीं ना 8.5 हां तो 9 लगा मैं 9 लगा हां 61 करना हां ट्रेड लगने के बाद ट्रेड लगने और जो नंबर तक ऊपर जाएगी उस नंबर के बाद हां जी उसमें ट्रेड है चाहिए नहीं आप बोलो किधर ना नहीं एक बाइक वाला लगाओ ना बाइक का लगाया
तो ये आपका ब्लू में आया ना जी हाँ तो मुझे कभी आगे ना बाय वो नहीं चिंता ही नहीं है। देखो जो वो सिखा रहे हैं ना वही वो सिखा रहे हैं। तो सारा डेमो होगा ना। हाँ तो हम मीडियम देखो जो ग्रीन है ना सैंपलिंग में ये रेड आ गया तो ना ऑटोमेटिक ना ठीक है। हां रेड किया बैकग्राउंड डाल के क्योंकि दोनों मैच कैसे नाम है पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी। पहले तो ये देखना है आगे चार मेरा देगा नाइन पे लगा दूंगा विद नाइन हो गया अभी कोई ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बैकग्राउंड लाल चालू है। हाँ जी ये भी पहले ऊपर का पहले आ रही है साइड आउट ठीक है इस टाइम पहले में कोई चीज नहीं चाहे बाय में हो चाहे वो सेल में क्योंकि टाइम हो गया है 11 बजे तक अंदर तो अब बाय में टाइम हो गया है अभी अच्छा तो चेंज करना चाहते हैं हाँ देखो 6 और 7 भी है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ 6 ਵਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ 9:30 ਵਜੇ अपने नॉर्थ अमेरिका का दस और अभी ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਮੂਲ ਹੀ तेगा बताऊं समझ देगा बस बहुत जल्दी परमिशन कभी अकाउंट वो तो बिना में क्लोज करना पड़ेगा ना मेरे सब कुछ क्लोज हो जाएगा स्टॉप लॉस लगाया हुआ अगर अभी तक क्लोज भी करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका नहीं मिलेगा जब तक इनमें चेंज नहीं अगर आप वो हल्दी तो स्टॉप लॉस पड़ जाएगा हां ये और भी कोई नहीं ऑर्डर हां हां तो अगर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस भी है जगह अगर एक लंबा में है तो पुलिस स्टॉप 21550 जगह ये ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ऊपर का शेड्यूल में कैसी है ना ये जगह रियल प्राइस है ना रियल प्राइस इस देश में चार्ट का मतलब 100 नहीं एक काटो ना चार्ट नहीं वो तो चलेगा ये है ये जो पॉइंट है ना 81 है उसको पॉइंट बोलते हैं तो मैं कहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे करती हूँ मैं जब यहाँ पे करती हूँ तो मैं तो हाथ तो ये सब गुड मॉर्निंग वाली तो नहीं यार प्रॉब्लम है लेकिन मैं लेकर सुनाता हूं तो देखो हो गया रियल लाइफ में चल रहा है
ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ नहीं है तो वो हाथों पर मिले हैं कि ये एक्टिव कुछ प्राइस चल रहा है आई नो एक्टिव तो जीरो आता है और जब देखते सीए का मतलब ये तो कभी ऐसा करते हैं सावधि काम करते हैं वही नहीं तो रियल डाटा वो उसका नाम है किसी अलग कुछ नहीं वो कह रहे हैं कि पहले कैसे 15 दिन है करो 15 दिन का अलग है थोड़ा असर लगता है ये लोग न्यूज़ में नाम ना तो ना बारह ईमेल बनाओ एक साल का सिमुलेटर में नवी ईमेल आपको चलने का 6 महीने ईमेल दोबारा काम ये देखो लेकिन 6 महीने तक तो सब काम कर सकते हैं ऐसे जाकर इक्वली दो करो कम महीना हो जाएगा उस तो बहुत जितने दिन चल रही है ये सस्ता में एक 30 और 50 कैसा तो बैठ जाएंगे ना हां जो वो नेचुरल एफेक्ट में है $16 $16 $16 से खोलना 11 खोला मैं सब ठीक है मैंने पूरी दी हुई थी उधर बहुत से तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ और फिर में काट लो हां जी ना और फिर में लाना काट दो ना कई बार जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो कई बार काम नहीं होता है आपको भी होता है लेकिन एडजस्टमेंट के लिए मैनेजमेंट लगा दें 1547 हां इसके लिए तो नीचे हो गया फिर मुझे लगा बात हो गया या फिर लोग सारे तो मोबाइल लॉगिन फेल हो गया ना कलर रिकॉर्डिंग है फिर मोबाइल में फिर उसको बाद सारे पेमेंट बंद करते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट देगा लॉस है तो लॉस कवर कितना ओके जब एक लेग पे मैच करेगा तो फिर बाइंग दे हां जी नहीं देना तो हम ये बाइंग तो समझ के एक सब तक चलते हैं तो अगर हो जाते इनकी अलग विंडो खोलो उसकी अलग लेकिन ये वाइस का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ इधर में जो है टाइप है तो जो मैनुअल ये समझ या उसका जो लॉगिन हो जाना तो लॉस में कवर आ जाती है लेकिन मैं तो बात देखो मेरी अगर कैट का हां जी ये क्या वो सब काम कर वो सब है तो अपना जो रैम की केबल है अपना i5 है 7 है हां वो क्या ये आ गया है चक्कर से मैंने ट्रेडर में भी जाके अकाउंट क्लोज कर सकते हैं अकाउंट क्लोज की तो अकाउंट में कैश में फिर बात चीनी की पुलिस में रजिस्टर लेकिन वो चीजें खाना है जाके तो करते तो आप तो ये मेजर मार्केट में चाइना वाइना चलेगी ना आप इसको अगर मैंने खत्म करना हो नहीं आपको इसमें रखना मार्केट चलाओ देखो ट्रेडिंग वो ना स्टैंड और वो नहीं वो तो वापस वापस करेगा जो फंस जाएगा तो ठीक है बोलना तो पे नहीं तो ना ऑप्शन नहीं इतने थ्रेशोल्ड ज्यादा कोई तो मेरे अकाउंट वाले मान गया सीगा लेकिन वो लेकिन मार्केट इतनी मैं दो आगे रखते चलते सी जेड़ा मैंने एक यार सारा लिक्विडेट हो गया और परसों ही बहुत प्लस कर लिया सीगा ये जब ये बन गया और उन्होंने रिक्वेस्ट पाई सी रात को उन्होंने ईमेल आ गई तो टाइप बात कर रहे थे फिर आप बोलना था फिर उसके बाद मेरा $200 पे करना पूरी लिमिट नहीं थी एक्सपायर की 5-6 साल बोलना उसका पी है फिर से डील आई थी जब हमारी पैसे डील आने हैं तो वो टारगेट पर कोई नहीं मिली ये टारगेट सबका ही है उसका टारगेट कितने वाला महीने के पीछे ये वो तीन है 6 महीने पूरे साल हां ये 2
स्टेज है ना, एक क्वालिफिकेशन दी है ये कहते हैं, अगर वो पास कर लेंगे तो पीएच जाते हैं, ये मतलब परफॉर्मेंस अकाउंट, ये है इवैल्यूएशन अकाउंट। इवैल्यूएशन भी $16 देते हैं और अमाउंट कहता है कि ये 50,000 का अकाउंट है, तो 3,000 बना के रखा दो, तो कामों से परफॉर्मेंस पे ठीक है, तो पास करो पहले, टेस्ट पास करो, वो फिर जब टेस्ट पास कर लिया, कल जीवन पास कर लिया, फिर उन्होंने फिर कभी जीवन जीवन वास्ते फिर से कहते हैं कि परफॉर्मेंस अकाउंट का यूजली 1 साल का टाइम है, लाइफ टाइम कहते हैं कई का लिखा होता है जिਵੇਂ लगे 1 साल लिखा, लेकिन कहते सारे स्टूडेंट वास्ते लाइफ टाइम है, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ 3,000 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ 2,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ 11 ਚਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 11 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, 11 ਇੰਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ 2,000 ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੋਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60 ਡਾਲਰ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 10 ਅਕਾਊਂਟ 20 ਆ every 10 minutes. नहीं वो साढ़े ऊपर है कि वो भी करते हैं, कहते नहीं कि अकाउंट में 50 डॉलर बनाते हैं, ठीक है जी, 50 डॉलर बनाने में 22 दिन है, महीने में 1100 डॉलर बन गया 3 महीने के, जिन्हें मौका लगा वो दिन उन्होंने 100 बना लिए, 200 बना लिए, 150 बना लिए, वो सब है जी धीरे धीरे काम थोड़ा सा आइडिया और लग जाता है, अपनी गलती कुछ पता चलने लग जाती है कि मैं गलती कर गया, लेकिन ये लोग जल्दी से 8.5 पॉइंट तक मोबाइल में सब पॉइंट फिर तो बहुत बंदे ਨੂੰ 1-2 ईयर्स फेल करने चाहिए। आपकी मिड बैंड की एटीएम फाइनल यानी कि खुद हाँ हाँ यानी कि यार देखिए पता क्या है, जो वो भाई बैठे हुए हैं ना, उनको मसला सिर्फ आ रहा है, फियर है कि एंटर कहां से करना। देखिए उन्होंने वही चीज वीडियो देख के सोच ली, अभी उनको ये भी नहीं पता चार्ट ट्रेडर कैसे होना होता है, ठीक है। अब हमने सिर्फ उनको बहुत इजी करना है। पहली कंडीशन ये है, तो सो द गुड न्यूज इज वी हैव एन अप्रूवल फॉर ES development of mid band trade. So it will check for you 4 conditions. Is my 1510 green? It will check for you. Is my 3020 green? Okay, the 2 conditions. Number 3 condition, is there if the price is coming from higher high? 3rd condition, तीसरी condition है ना. Number 4, is there a diversion line up or down, right? If there is a, and the 5th condition, it will check large triggers must be green. If it checks all 5, it will automatically place a ATM, advanced trade management, with the auto trailing. That's done. So it will put a TP of 60, SL of 20, right? So it will do, and with an auto trailing at the low of the bar. So with an auto trailing option, right? हाँ नहीं वो ऊपर खोलेगा ना। देखें आज उन्होंने 22 पॉइंट लिए हैं, तो होगा ये कि वो ये अब एटीएम सबसे रश में जा रही है। पहले वो हायर हाई वाली बन रही थी, ब्रेकआउट वाली, वो ठीक है, वो उसकी प्रायोरिटी नीचे करवा दी है। आज डेवलपर्स को सबात करके अब नहीं इसका ट्रायल आ जाएगा 2-3 में, मैं उसको टेस्टिंग शुरू कर दूंगा। तो ये अब उन लोगों के लिए कि अब पता क्या करें, देखिए प्राइस 84 से है, हायर हाई से है, दोनों चार्ट ग्रीन है, ठीक है, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, डाइवर्जन की लाइन भी नहीं है, ये मैच हो गया। तीसरा ये करेगा कि ये लो लार्ज ट्रिगर भी ग्रीन देख लेगा, ए देखो ए लिखो ए हैच, अगर ए ग्रीन होएगा वो इत्थे ऑर्डर ला देगा, ठीक है, ब्लैक कैंडल तो बाद लाएगा। हुण देखो वो फिर तुहानू सिर्फ ना बैक के उन्हों इनेबल ते डिसेबल करना है, ਉਹਦੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ नहीं है, उन्हें स्टॉप लॉस भी लाया हुआ है थले,
ਤੇ 20 ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 20 ਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਮੈਂ 8 ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਵਰਸਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬਣਿਆ, ਲੋ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਲੋ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਚਲੇਗਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ। वो 8.5 साल का कैलकुलेट नहीं करेगा। ਨਹੀਂ 8.5 ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੇਗਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਟਿਕਸ ਦਾ। हाँ नहीं वो खोल देगा ट्रेड आपका इस एसएल पे। कुछ लोग बड़ा एसएल चाह रहे हैं, कुछ लोग 8.5 नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं हमने 9 पे बैठे होते हैं, 9 तक मैं बैठा हूं, क्योंकि 9 क्या हो रहा है 30-20 में 9 आ जाए ना तो वो ब्लैक कैंडल बन के कई दफा ऊपर चली जाती है, वो कहते हैं हम 9 तक स्टॉप लॉस लेते हैं और 0 पे बाहर आ जाते हैं, वो 30-20 का हम मिड बैंड ले लेते हैं, तो वो अगर यहाँ एंटर हुए हैं तो वो 9 तो 8.5 का तो पे ब्लैक कैंडल बनी, वो अपने आप को 2 टिक्स और दे रहे हैं कि यार ठीक है मैं ना $25 और डाल देता हूं, तो वो 20 पर बनता है, 20 का मतलब है 5 पॉइंट, तो मिड बैंड से 5 पॉइंट नीचे वो आप ट्रेड में आप उसको क्विकली नैरो कर दो तो नो प्रॉब्लम। या उस पे अगर रिवर्स ट्रेड का हो जाए हाँ वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सर आपके लिए स्पेसिफिकली बिगिनर ट्रेडर्स जो अभी दिक्कत पा रहे हैं कि मेरे साथ अब पता क्या ट्रेड है, आप 6081 पे बाय करें, लगा के बैठ जाएं, इससे आपने पहले ही उस बस स्टॉप पे खा के खड़े हो जाना। हाँ ये देखें वेट ही करना, देखें या हाँ ये है मैंने लगाया हुआ था 6077 पे। नहीं ये अभी ऑर्डर चला गया 6081 पे, ये देखें मिड बैंड आपका 6076 के करीब है, ये एटलीस्ट 2-3 हफ्ते लगेंगे, ये आपकी मेंबरशिप के अंदर इंक्लूड होगी, तो इट्स तो अब देखें ये मिड बैंड है आपका, यहाँ पर आप ऑर्डर लगा के बस स्टॉप पे खड़े हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपसे ये कह रहा है कि ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ से बाय करने की, आएगा यहाँ पे जरूर आएगा तो बाय हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बाय हो, नहीं अभी नहीं जाए, तो अब मैं मूव कर रहा हूँ ना, मैं इसको ये इस पे क्लिक करके इधर मूव आपने नंबर क्लिक किया LMT पे क्लिक किया, आपने LMT पे क्लिक किया, हाँ इस बार में LMT पे डाल, आप अपना कर्सर इस पे लेकर आओगे ना LMT पे तो वो हाथ बन जाएगा, नहीं बनाना, क्लिक करोगे तो बनेगा ना, क्लिक कर दिया, जहाँ लेके जाना है वहाँ ले जाओ, नहीं वो तो मैं लेके जा रही हूँ, बट ये एक कल था कि ऑटो ट्रेड भी कर सकते, हाँ वो चीज उन्होंने एक कमांड बोली थी जो आपने नहीं करी थी, या फिर कंप्लीट है, ये आपको प्रेस कंट्रोल हो जाएगा, डबल क्लिक ऑन LMT, डबल क्लिक ऑन LMT, हटा जाके क्या रोकेगा, कंट्रोल था वो जैसे ऊपर जाता रहेगा, तो बोला था पर कल भी ट्रेड जरा बड़ी उसके साथ, हाँ ये कल भी वॉलेट $75 का लॉस किया था, कल भी वॉलेटिल, लेकिन एक ट्रेड $90 फायदे में की थी, लेकिन 2 ट्रेड $500 की लॉस में की। अरे क्यों नंबर प्लस माइनस रेड अभी तो पहुंचा ही नहीं वहाँ पे, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये उसके बाद ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वहीं पे भी खड़ा रहेगा, तो जब आएगा
All right. See you guys tomorrow. Enjoy. वहीं पर ही तो है ये क्या हट जाएगा नंबर तो एग्जिस्ट करते ही हैं नंबर तो वहीं पर ही खड़े हैं आपने अपना ऑर्डर उसको लगाया हुआ वो कोई हटा नहीं उसके पीछे हाँ वो उसके पीछे इसका मिड बैंड का नंबर के ऊपर आपने लगाया है उसके पीछे इसको डिलीट करो तो वो नंबर कम ना वो दो कम जैसे कि वो आपने अपना लेकिन आपने एटीएम लगाया तो लगाया नहीं अगर एटीएम नहीं लगा होता तो अपना सबको हाँ एलएमटी जहाँ पे लिखा होगा उसको क्लिक करना वर्ड्स को क्लिक करना अल्फाबेट को ले आना जब आप वर्ड को क्लिक करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा एक बार क्लिक करो हाथ बना और ऊपर अभी छोड़ दो ये अटैच किया है दिस इज तो अगर ये जैसे अटैच है तो अगर मैं इसको मैन्युअली डाउनलोड तो अटैच कर जाएगा अटैच करना है ओके करेंगे तो उसका टाइम लगेगा एक और फिर उससे करेंगे तो जहां मूव होगा फिर आपको जो ना ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन आ गए वो क्वेश्चन का नाम आंसर सर मार्केट में प्लेबैक के लिए मिलेगा कनेक्शन बंद करके सारे कनेक्शन प्लेबैक लिखे. Have a nice day, everyone. Okay, ji, take care. come down to this right lower low lower high low higher low इसका हायर हाई बनाया फिर हायर लो बनाया अब इसने बनाया हायर हाई हायर हाई बनाया हायर लो आ गया कोई टेंशन नहीं और अगर मैं मेरी बात सुनो अगर प्रॉफिट ट्रेड हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है ट्रेड हो रहा है किसी मतलब प्रॉफिट में ट्रेड हो रहा है $125 नीचे वो नीचे आया कोई लॉस जीरो अब तो हमने ये भी कर रखा है दस टिक के बाद जब आपका स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा वो जैसे ऊपर जाएगी वो स्विंग उसमें बहुत हेल्प करेगी आज वो बहुत हेल्प करेगी 27 पॉइंट ऊपर भी मार्केट में 22 है सो वो उसमें हेल्प करेगा स्विंग्स में हेल्प करेगा देखिए if at any given point of time there is a very very good argument it's called the low क्या आपका ऑर्डर पिक हुआ मार्केट 100 तक गई 100 से 75 पे आ गई तो कि मार्केट अगर वैसे नहीं चल रही है सिक्योर या $100 कॉन्फिडेंस आपका तब आएगा जब आप स्विंग देखोगे आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट ट्रेड करता हुआ जा रहा है you want longer trade जो टेक प्रॉफिट है वो देखो शुरू अगर आप ऐसे ट्रेड तो आते नहीं है लंबे लंबे प्रॉब्लम तो नहीं आती आपको $100 $200 अगर 150 पे चला गया तो $200 पे चला गया हाँ हाँ 225 पे चला गया 250 पे चला गया 200 तो अब मार्केट जितनी ऊपर जा रही है तो उसको मैनुअली ऊपर कम करो
अगर मार्केट एकदम से शूट आउट नीचे किया तो 200 तो है 250 उसके बाद खत्म हो वन चलेगा ना तो दुख होगा। मैं शाम तक तड़प रहा था। I wanted to get back in the market and maybe extra $50. But I stopped early. बड़ा कोशिश करते हैं कि दोनों का समय है दूसरा दोनों का ट्रेड बनाते हैं लाइन में मुझे लाई पूरा रिजर्वेशन में का टाइम पूरा सवाल को तो सीधा ही नहीं करने के बाद तो समाज में भी नहीं निकल अगर मैं तो दूसरा काम में जा सकता है तो मैं सवाल एडवर्ड आपने भाई सेटिंग है तो थोड़ा बहुत वो नंबर नहीं आएगा से नंबर ड्रॉप कर तो शाम के 4 बजे आ रहा है और एक ही राउंड 14,000 Don't trade for the sake of trading, trade to make money. सीखना है अब आपने नेट बैंक का ऑर्डर लगाया है नेट बैंक का ऑर्डर लगाया आपका ऑर्डर पिक नहीं आया ही नहीं ना कोई टेंशन है जब आएगा पिक करेंगे तो टेंशन में तो क्या पॉसिबल है पैसा लगाएंगे जो वो पैसा बनाएगी उसका टारगेट हमने ऊपर रखा जो पैसा निकालेगी उसका टारगेट नीचे रखा नीचे गई आपको लगा आपका गलत है तो क्लोज बटन दबा दो फिर कोई से स्टॉप अगर वो आपकी डायरेक्शन में गई सपोज $50 अपना स्टॉप लॉस लगाओ $12.50 ट्रेडिंग की 12.50 से सिक्योर हो गई वो 75 पे गई 25 पे गई 100 पे गई 50 पे गई 150 पे गई 75 पे गई ऐसा इसको ट्रेडिंग करते हैं अगर 200 पे पहुंच गई आपने 150 लॉस कर रखा है या 100 लॉस कर कितनी देर लगती है जिस तरह सेकंड मुझे आपको चाहिए नहीं देखना क्या बोले सर ये लकी की यू हमने जो शुरू किया था एटीएम में नहीं था लेकिन रिटर्न जो है इसमें more money है एक अरसे के बाद आज मैंने रिपोर्ट लगाया एक अरसे के तो और कंडी से तो बेसिक मुझे आपने वीडियो रखा है ना वेरी गुड अगर आपको ये सेटअप नहीं दिखता आप दूसरा डॉलर बना रहे हैं पहले 100 बनाना चाहिए जब 100 बन जाएगा तो जितनी ही मेहनत लगेगी 200 बनाना सिर्फ कुछ नहीं
11 बजे से पहले 9:30 बजे तक ट्रेड खत्म हो जाती है। साढ़े 9 बजे ये 23 ट्रेड होता है। आप रात के 12 बजे लगा दो तो फुल लगा सकते हो। Really? But this is not why you're trading with an extra $200. You want this one to $100. Then focus on the goals, your target is every day. Target of the goal every day. अब इसके 4x को $50 बनते हैं, 5x को $10 क्या 10 दिन में $100 बनता है, 8x को $100 लेकिन तो चलता तो बहुत एरिया गोल्ड एरिया वो एक्सट्रीम हाई टच करके एक्सट्रीम लो था तो एक्सपेक्टेड टू पास बाय और तक में ये तो I think he has a class today, I think. नो नहीं आते हैं, ट्रायल में नहीं आते, आते हैं एक सेकंड आते हैं। बिल्कुल आते हैं सर, उनको लॉग इन करें तो एरिया नहीं वो सिर्फ ऐड करने हैं। का जो चार्ट है ना उसके अंदर सारे एरिया प्लॉटेड है, दो प्लॉट है तो बाद में डाल देंगे, बाद में पहले तो बाय सेल के साथ बात करते हैं। आपके 30 मिनट के चार्ट है इसका डे ऐसा होता है स्टॉप लॉस का तो हो गया 30 मिनट का करता हूं तो मासूम इधर होगी। अच्छा ओडी लॉस का कंपोजिशन एटलीस्ट 2 महीने लग जाएंगे ऑटोमेशन वाला। नहीं लगाना रेक्टिफाई कराएंगे, फिर लॉस ही जाएगा, फिर आएगा फिर अकाउंट लाएंगे, फिर अकाउंट बाजार पर ट्राई कराएंगे, उसके बाद हम बदला करके साइड में डालना। मतलब
भाई हजारों अकाउंट पे 100 अकाउंट तो खराब करके नहीं नहीं टेस्टिंग ਦਾ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਏ ਸਟੈਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਛਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਨੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਣਗੇ आज क्लास 2 है all right guys it's time to wrap this thing up मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हो गई चेंज कर लेते हैं हम तो चर्चा लगा रहे हैं बहुत अच्छी चीजें हैं दोनों नहीं ये भी तो नहीं पाँच छह महीने हाँ जी कोई इशू कह रहा हूँ नहीं रेस्टोरेंट है शेड्यूल के नाम पे रेस्टोरेंट होते हैं The first time you walk into a restaurant, you're like, you didn't understand the tone of the operation of the restaurant. Because, you didn't understand anything. So it took you almost a month to figure it out. You know, like something. No, in your restaurant. Yeah. It took you some time. Right? 4 months. 2 months. Everything definitely. Yeah, I didn't know anything about trading. I didn't even know tea or same thing. I'm from the food business. मिड बैंड चल गया आपका हो गया और पैसे भी बन गए तो 200 ले लिया खत्म हो गया ट्रेड डन हो गया दैट्स इट और क्या और पैसे बन गए बातें करते करते नहीं 800 उसने 2 तो फिर अपना टीपी बहुत ऊपर लगाएं और फिर ट्रेल करें तो बंद होके उसको How are you, boss? No, I'm dating with
But the money will be $3? Yeah, 8 more days. एक नोट ये है एक मस्त अब क्या करना है आपने और जस्ट बंद नहीं है just pay. और नहीं तो कैसे ये सेल सब दिख रहा है आपको That's the problem. Now it is very bad market. हाँ एसटीपी उठाया बॉटम ऑफ द बार ले आओ अब जो इसके बड़े तो बाहर ले आओ ना अब $212 अगर $212 चाहिए 200 चाहिए तो क्लोज कर दो वरना ये $50 अच्छा तो इसको करो बंद कितने में से चाहिए जितने भी आ गए $237.50 चाहिए अरे बॉटम ऑफ द बार आते हैं तो भाई ये बॉटम ऑफ द बार है उसको उठाया बॉटम ऑफ द बार ले आया हाँ जी ये टॉप ऑफ द बार है ये बॉटम ऑफ द बार है तो मैं बॉटम ऑफ द बार चला के छोड़ दिया अब वो ऊपर आ गया अगर वो नीचे आती तो वहां से $50 दे देती मैं तो ऊपर जा रही आपने $237 दे दी क्लोज करो $3 नहीं तीन पॉइंट्स है एक मिनट कर उसको करने की जरूरत नहीं है डॉलर पे करोगे तो समझ नहीं आएगी टेंशन में क्या आएगा your target is to get 2 points you got 3.25 points 3.5 points 275 हो गए तो 3 point 2.75 points हो गए your target is 2 points नहीं 4 point something टारगेट 2 पॉइंट का है 4 पॉइंट का है दुकान बंद करो चलो किसी ने ये तो नहीं कहा कि सारा दिन बैठना है बनाओ अपने दूसरा वाला चैप्टर सर कल मार्केट सेम इसी तरह एप्पल दी न्यूज़ है कल फ्लाइट वो आपको सब कुछ दिखाता है आपको जो कुछ भी कैसे कैसे दिखाता हूँ लोगों को मैं कल दिखाता हूँ कौन सी समथिंग Yeah. Yes, something